Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, it is that time of the week जब हम excited होते हैं यार, फुटबॉल is back again because हाँ यार, who am I हो गया, काफी सारी चीजें, फीफा हो गया, lot of content हुआ midweek में, like लेकिन when it comes to real football, भाई that is real football और that is something हम हमेशा बात करेंगे, predict करेंगे भाई, predicted lineups, injury news, be it score predictions or be it a lot more, because it's not just Premier League. Each weekend we have, of course, La Liga, Bundesliga तो है ही, सेरिया भी है, यस डेफिनेटली, और लीगा भी है ही। भाई काफी सारे चीज हमने डिस्कस करना है, तो यार हो सकता है ये स्ट्रीम काफी लंबा जाए, लेकिन अगर आप लोग साथ दे तब जाएगा। लेकिन वो कैसे हो सकता है भाई, सब लोग जो देख रहे हैं यार, लाइक कर दीजिए, कम ऑन, लाइक द स्ट्रीम, जस्ट अ थम्स अप बटन, एंड जस्ट नॉट दैट, हो सके तो share the stream as well so that we have more people. Or yes, especially I'm hoping कि all members to join करेगी, but even all the subscribers as well, because members के लिए especially there is a prediction league. हाँ, मैंने publish नहीं किया scores on the prediction league week 1 में क्या scores थे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको मिल जाएगा एक और मैसेज मेंबर्स आप हमारे कम्युनिटी पेज में। बट इवन फॉर नॉन मेंबर्स भाई काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यस एफपीएल पाएंगे कल, डेफिनेटली आएंगे, बट बिकॉज डेडलाइन कल है, ठीक है, डेडलाइन स्ट्रीम कल करने वाले। हैविंग सेड दैट, एफपीएल के बारे में कुछ न्यूज आने वाला है अबाउट इंजरीज एंड व्हाट नॉट, तो हम धीरे धीरे करेंगे, विल गो ऑन एवरी टीम पॉसिबल वीकेंड में, और भाई सब लोग बिग अप हो जाए एब्सोल्युटली। एंड यस, जैसे आप देख रहे हो भाई, वेलकम टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, डू विद द लाइक्स, subscribe and share if you believe in our overall content on both the channels. Check this description for all the links, especially FPL and Discord server. ये था आप लोग के लिए, और yes, Vanabas Budit in the house, yes, and it's a big weekend by Chelsea Spurs. Always is a big weekend, especially for Spurs मैं बोलूंगा, because भाई let's be honest, Chelsea has had the number over them. हाँ, ज्यादा मैं उड़ूंगा नहीं, because it is Antonio Conte Spurs in form. तो यार we'll be talking about that मानव बिल्कुल, और भाई we'll be talking about City, even Barcelona to some extent, and of course Liverpool हो जाए और Arsenal हो जाए। Arsenal है big game. Arsenal Leicester काफी disappoint नहीं करता है, remember that. Big up to David Antar Sports as well. Big up bro, a fellow content creator of Chelsea as well. Ankit bhaiya, Ocampus keen for Liao. As Milan fan, do you see it happening? Wow, Ocampus, you know what? मतलब मुझे लगता है डाउट यार, मैं काफी बोल रहा हूँ, डेरेन बिग अप भाई, अगेन मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, लाइक मानव एज वेल। भाई मैं बोल रहा हूँ क्विकली, इट इज सर्टनली अ फैक्ट कि मिलान को जस्ट रखना है, एज फार एज दे आर एबल टू कीप द टीम, दे आर गुड। और ऑफ कोर्स मिलान का भी इंपॉर्टेंट मैच है भाई, विल कम टू दैट डेरेन, बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को भी, एज ऑलवेज डेरेन, चेल्सी वर्सेस स्पर्स विल बी जस्ट टू गुड टू सी। Yes, everyone यार are licking their lips. Oh, can we expect Kukurea line up tomorrow? यार मैंने एक पोल डाला था, पता नहीं मेरी नजर लगी कि क्या हो गया, वहां पर एक not so good news है, not about Kukurea, but we'll come to that absolutely. Dhruv Sharma in the house, hello as well. Mayuk, फ्रेंकी का सेक्शन डेम्बेले जैसा लग रहा है, यस बिल्कुल, ये भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हम ट्रांसफर्स की बातें भी करेंगे डेफिनेटली एज एंड व्हेन वी आर कमिंग टू एवरी मैच प्रेडिक्शन एंड प्रीव्यू, ठीक है। कुकुरे एज अ प्लेयर आई एम एक्साइटेड टू सी फ्रॉम चेल्सी टुमारो, ओके फेयर इनफ। हाउ आर यू अंकित भाई, मुजाहिद, ऑल गुड यार, स्पेशली आफ्टर विनिंग द चैंपियंस लीग इन फीफा। यस, हमने फर्स्ट सीजन में क्वाड्रुपल ले लिया है। फॉर पीपल हु मिस्ड आउट भाई, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे चेक करिए, फीफा 22 का फर्स्ट सीजन हमने कंप्लीट कर लिया है, लीग सीजन दैट इज, एंड अभी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं स्पेस, सो दैट्स इंटरेस्टिंग एज वेल, विल कम बैक टू दैट मुजाहिद एज वेल। एंड यस गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वी आर वेरी क्लोज टू 5K, कम ऑन लेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब, जैसे मुदित बोल रहे, थैंक्स मुदित एज ऑलवेज। एंड यहाँ पर मैं टारगेट आपको याद दिला देता हूँ भाई, कर देते हैं डेफिनेटली, ज्यादा टारगेट नहीं रख रहे, लेट्स गो विद 5K एंड 150 लाइक्स, ठीक है अभी के लिए। वी आर अंडरडॉग्स इन दिस मैच, उत्कर्ष बोल रहे, बट जैसे आर्सेनल भी हमें हरा देती है, वैसे चेल्सी को भी जीतना चाहिए, मतलब यू नो व्हाट, दैट इज द थिंग, आर्सेनल लेस्टर इज वन ऑफ दोस गेम्स, एज मच एज लेस्टर मतलब वार्डी इज वेरी गुड अगेंस्ट आर्सेनल, लेकिन दे हैव समथिंग अगेंस्ट लेस्टर एज वेल, और ऑफ कोर्स चेल्सी और स्पर्स भी आर, वी कैन नॉट गो, दोनों मैच काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मैचेस है। थॉट्स ऑन ओबा लिंक्स, या विल कम टू दैट। सुपर टॉमी टुकल, होप यू आर वेल, आई एम स्टार्टिंग दैट सुपर टॉमी टुकल, कमिंग बैक टू ट्रांसफर्स व्हेन वी आर कमिंग टू द चेल्सी मैच। यस, तो यार और लोग आ जाए भाई, चेल्सी मैच बहुत बड़ा मैच है, तो वी विल होप दैट वी हैव एटलीस्ट 100 पीपल वाचिंग। वो कैसा होगा, आप लोग सब लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जहां भी हो सके। यस, मैंने ट्वीट भी किया उसके बारे में, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, और आई हैव पुट इन द इंस्टाग्राम पोस्ट, इफ यू कैन जस्ट लाइक एंड रीट्वीट दैट, ब्रिलियंट। चलो, हाउ विल कॉन्टे फिट इन रिचार्लिसन, यहाँ भी यार अगेन चेल्सी वर्सेस स्पर्स में स्टार कर रहा हूँ ये। सेंटर बैक कौन आएगा अगेन, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन भी दूंगा बाय द वे। अंकित भाई, डू यू थिंक
60 for Richarlison is waste. Don't get me wrong, he's quality but not 60. Yeah, मतलब I agree with that. I agree 100%. लेकिन यार स्पर्स को बैकअप मिल नहीं रहा था, तो बैकअप स्ट्राइकर क्वालिटी पे करना पड़ता है यार at the end of the day. Alex Johnson in the house. Nice to see you as well. Again, people, let's have more people. How do you get that? Let's like, share and subscribe. भाई सब लोग याद दिला दो यार, हम लोग भी लाइव है आज, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था सुबह एंड कल रात को भी जो लोग फीफा देख रहे थे कि यार वील डेफिनेटली बी लाइव फॉर द गेम वीक प्रीव्यू. आर यू कॉन्फिडेंट गोइंग टू मैच अगेंस्ट स्पर्स? मैन, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, लेकिन एट द सेम टाइम स्पर्स, यस इट्स एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स, लेकिन इट्स सम कुछ है हिस्ट्री अबाउट इट. और यस पीपल, आई एम नॉट 100% वेल आज, यू नो मेरी तबीयत 100% नहीं है आज, तो अगर मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है थोड़ा तो बता दे यार ज्यादा. आई होप आई एम एब्सोल्युटली फाइन अभी, नो प्रॉब्लम इन दैट. अमित भाई, इन फफाना एंड ओबामियांग, इफ यू हैव टू चूज वन, हु विल यू चूज? हाँ, आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन पहले भी. हमारी नीड आज के दिन में है टू फिनिश गोल्स, यस, लेकिन इज ओबामियांग जो आंसर? नो. इसीलिए मैं फफाना के साथ जाऊंगा बिकॉज ही इज अ बेटर क्वालिटी. ठीक है अभी यार, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी है. यूनाइटेड विल लूज, ओके, इंटरेस्टिंग. रियल मैड्रिड, KCM और मैन सिटी मिडफील्ड, व्हिच विल यू लाइक टू हैव इन योर टीम? ओके भाई, प्रीमियर लीग में तो मैन सिटी एंड UCL में रियल मैड्रिड. हाउ इज दैट चॉइस? आई नो चीटिंग किया मैंने, लेकिन इट्स व्हाट इट इज. बिग अप टू मैट एज वेल, जो जीनियस डेफिनेटली देयर इन द हाउस. मैट इज अ फेलो चेल्सी क्रिएटर एज वेल, चेक हिम आउट. ओके, चलो यहाँ पे शुरू करते हैं. एंड यस, हु इज रेफरी? भाई टेलर. लेकिन यू नो व्हाट, टेलर हैज डन वेल इन द लास्ट मैच जो किए था. आई डोंट थिंक इतना सरप्राइज हुआ था लास्ट टाइम, सो आई थिंक वी आर गुड. तो यार अभी एक एक पर आते यार, हम शुरू करने वाले बिकॉज काफी लोग नहीं है फॉर वट एवर रीजन. लुक्स लाइक यार लोग या तो स्कूल से नहीं है या तो वर्क से नहीं है, बट होपफुली पीपल जॉइन अस. एंड अगेन पीपल विल जॉइन अस बाय यू गाइस शेयरिंग इट बाय वर्ड ऑफ माउथ. वो चाहिए मुझे, तो होपफुली विद योर हेल्प वी कैन गेट देयर. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, be it any platform, and I'm pretty sure I have put on all the social media. So let's start with Arsenal versus Leicester. ठीक है, तो Arsenal versus Leicester will start with. and यहाँ पर यार देखिए, मतलब अगेन पीपल, बिग मैच इज डेफिनेटली चेल्सी, स्पर्स एंड अदर लीग्स एज वेल जब आएंगे, लेकिन यार विल कम वन बाय वन, सो प्लीज स्टे पेशेंट. We will try and cover as much details as possible because this is about basically their fans as well as your FPL teams. Remember, तो वहां पर भी यार you will have something to play for absolutely. भाई आर्सेनल वर्सेस लेस्टर, as far as I'm concerned, भाई लास्ट वीक क्या हुआ था? लास्ट वीक भाई आर्सेनल रियली इम्प्रेस्ड. आई हैव टू से द रियली इम्प्रेस्ड. Did Leicester impress? Leicester impressed attacking wise. In my opinion, attacking wise they impressed. Or the biggest win for Leicester is keeping Maddison. Maddison is going to be in Leicester. I think it's a huge win. And Tielemans भी लग रहे हैं यार, he might just end up being at Leicester itself. As much as they have gotten rid of their goalkeeper, probably Fofana. Yes, Brendan Rodgers का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था and उसमें Fofana के लिए बोले थे that earlier he said he's not for sale. This time he said no, we don't want to sell him. So there's a difference. Or the fact is यार, the price is nowhere near जो वो deserve करते. तो I think they are open to selling Fofana at the right price. और उनके हिसाब से right price obviously is close to 90 million, which I don't agree with. But again, उसमें क्या ही तो बोलोगे ना, it is basically the selling club. So they are calling the shots जैसे Maguire में हुआ था, right? लेकिन Mikel Arteta, people, how many of you have seen All or Nothing? I haven't seen. तो वहां पर बोलिए, what is the reaction about Mikel Arteta? The fact that मतलब एक वहां तो सीन था about him motivating the players with, I think, टोनी का ट्वीट लास्ट सीजन के पहला मैच में. आई थिंक ब्रेंटफोर्ड बीट आर्सेनल एंड आइवन टोनी हैड ट्वीटेड दैट ओके इट वाज बेसिकली अ वॉक इन द पार्क और समथिंग लाइक दैट. तो वो एक्चुअली दिखा के मोटिवेट किए थे. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट इज स्क्रिप्टेड यार, ऑल और नथिंग. आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ही इज प्रीटी मच अवेयर दैट देयर आर कैमरास. ओके, एनीवे, बट आई हैव टू गिव इट टू मिकेल आर्टेटा कि लास्ट वीकेंड जो परफॉर्मेंस थी, आई थिंक इट वाज वेरी गुड अगेंस्ट पैलेस. मतलब इट वाज नॉट जस्ट very good, it was solid. And solid and Arsenal hum use nahi kare in the recent years, right? So that is what I'm giving to Arsenal. And yes, people, I will take predictions from everyone. And again, I repeat, members especially, aap prediction dalna at the end of the video with all the 10 predictions, okay? Or I'll anyway message in the community post for members tomorrow. So wahan par aap predictions dal sakte ho for the prediction league, right? But people are not members. You can become members and generally be prediction league खेलिए definitely. तो predict करिए क्या होने वाला है यहाँ पे. Of course it is Arsenal versus Leicester, so it is at the Emirates, right? So यहाँ पर देखते हैं. The best part is, if I'm not wrong, in terms of injuries मैं देख रहा हूँ if they have any major injuries. Okay, so
Tierney was fit enough to come off the bench at Sellers Park on Friday after recovering from another knee injury, with Fabio Vieira, Emil Smith Rowe, and Tomiyasu, who featured for the under 21s, all absent. तो हो सकता है भाई दिस टाइम टोमियासु, ईएसआर और फैबियो वियरा बेंच में रहे एफपीएल के लिए. अगर लियो तो भाई डू नॉट स्टार्ट देम इन एफपीएल टीम्स इज व्हाट आई वुड से. बट again, Tierney, would you start him? I don't think so, because Zinchenko will probably start. Let's be honest about it. Okay. Whereas Ben White is performing superb again in right back. Would you say Ben White will be the right back, considering कि Saliba इतना अच्छा करे center back? मतलब you cannot drop anyone. Or would you say नहीं, Ben White should be replaced by Tomiyasu when he comes back? That's kind of, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, because you need a solid right back against Wilfried Zaha. Zaha, who's obviously linked with Chelsea. लेकिन हाँ, देखते हैं क्या होता है वहां पर. Obviously Saliba has made himself undroppable already, in my opinion. Leicester has had some transfers. Again, FPL के लिए बोल रहा हूँ quickly, but they have allowed Hamza Chaudhary to leave to Watford on loan. ठीक है. And they have been dealt a devastating blow with Ricardo Pereira. Now he has undergone an operation. तो लग रहा है भाई he's Ricardo Pereira, their talisman on the right flank जो होते थे भाई, he is out for 6 months. तो looks like वहां पे they might actually miss a fullback of that quality. लेकिन at the end of the day they also have others in the treatment room, that is Harvey Barnes नहीं खेल रहे और Ryan Bertrand भी नहीं है. तो again this is all for the FPL that मैं दे रहा हूँ आपको details. लेकिन हाँ, Jamie Vardy, now Jamie Vardy, he has scored 11 goals in this fixture. Wow, now that is something else. मतलब who are you expecting to score in this match? Let me know. And yes, मैं आने वाला हूँ in the comments now. Yes, again, people will try and not shift from match to match, because otherwise it'll be everywhere. There are literally मतलब 15-20 मैचेस के बारे में बात करना, तो हम गेम बाय गेम जाएंगे. तो आई एम स्टारिंग साई प्रीतम, मैंने देखा है आपका क्वेश्चन, तो मैंने एक्चुअली ट्वीट किया उसके बारे में. बट एनीवे, आई विल कम टू दैट डेफिनेटली. एंड यस, अगेन टेलर इज अ टॉकिंग पॉइंट. मैट, ऑफ कोर्स आई एम स्टारिंग दैट एज वेल. वी कांट बी कंप्लेसेंट अगेंस्ट लेस्टर. बिपरा बोल रहे हैं ऑन दैट डे they can do wonders, but I'm a bit optimistic. Okay, Bipra is optimistic. Bhai, Arsenal not doing in Arsenal. Bipra, big up, bhai. Again, people joining. Do like the stream, यार. उससे ही YouTube algorithm बताएगा बाकी लोग कि हम भी live है यार. मतलब हाँ, Spurs वर्सेस Chelsea big game और आने वाले उस पर next. ठीक है, तो do hold on. What is your view on Sergio Gomez? यहाँ पर भी मैं star कर रहा हूँ because it's not about this game, but I am going to come to that soon. Kunal, cannot see City not winning a trophy. Again, not related to this game, so we are coming back later. Kovacic FPL में था. I will come back. अंकित भैया, ओके, यहाँ पर अगेन पीपल लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट चेल्सी. मैं सिर्फ स्टार कर रहा हूँ. टॉटनहम इजीली विन अगेंस्ट चेल्सी 3-0. अभी आगे ऑलरेडी प्रेडिक्शन शुरू हो गए भाई. एनीवे, आप लोग शायद आर्सेनल लेस्टर में इंटरेस्टेड नहीं हो लग रहा है. कोई नहीं. यू विल नेवर वॉक अलोंग का सॉन्ग ट्रेनिंग में लगाया था, वो थोड़ा क्रिंज लगा. बाकी इट्स क्वाइट गुड अप टिल नाउ. ओके, इंटरेस्टिंग. नाउ अगेन ऑल और नथिंग का विप्ला ने देखा है. मैंने टू बी ऑनेस्ट एट द मोस्ट क्लिप्स देखे, मैंने नहीं देखा है. मतलब आई डोंट नो कहां पर अवेलेबल है, बट कोई नहीं यार, नो प्रॉब्लम. वन बस, यू कैन ऑलवेज बिकम अ मेंबर लेटर ऑन एज वेल. Arsenal scoring 3, having a clean sheet and winning convincingly. DJ Ayush, big up bro. Looks like he is going for Arsenal. And what about Talk MU, big up as well. Let's see. And yes, again Darren, आपका भी मैं कर रहा हूँ. I know that members को मैं prioritize दे रहा हूँ in terms of comments, लेकिन again because हम इतने सारे मैचेस के बारे में बात करने वाले, if बीच में मैं ना दूसरे मैच का टोटली लो तो that flow will go, right? So I hope it's fair, right? Because these are going to be weekly streams. ठीक है, ये वाला जो सीरीज है. फुटबॉल so unpredictable nowadays. बिल्कुल I agree. And yes, रूकी राहत आपका भी मैंने स्टार कर दिया है. एट स्टैमफोर्ड ब्रिज वापस से. ओके, चलो आप लोग सब लेट आकर पेल दिए सब कमेंट्स में, थिंकिंग वी आर टॉकिंग चेल्सी, बट नो प्रॉब्लम, वी डेफिनेटली कम बैक टू दैट. मैं सब स्टार कर रहा हूँ. ठीक है, ओके. हेलो आदर्श भाई, कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी. आदर्श, ऑफ कोर्स अ मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आदर्श, ऑलवेज हेल्प्स व्हेन यू कम ऑन. एंड यस पीपल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, उससे ही आएंगे ज्यादा लोग. Gabriel Jesus hat trick to seal the deal. Okay, Fofana price drop. Oh my god, that will be ideal, bhai. That will be ideal. I don't mind Arsenal winning as long as Fofana का price drop हो जाए. But talking about Fofana, we have a Leicester fan in the house. भाई आकाश, कैसे हो? आकाश, let me know. आप फ्री हो तो यार मैसेज करो, आ जाओ. मतलब we can talk about this game if you want. But नहीं तो यार always वेलकम. भाई आकाश बोल रहे हैं आर्सेनल 3 लेस्टर 1, एंड दैट इज व्हाट अ ट्रू लेस्टर फैन इज, नोइंग व्हाट लेस्टर इज गोइंग थ्रू. लेकिन आकाश, आप बोलिए द फैक्ट दैट वाडी हैज द नंबर ऑफ आर्सेनल,
Yes, Arsenal have a number on Leicester, especially at the Emirates. लेकिन क्या लगता है भाई? Don't you think that there is something to it, or something can give, especially Madison को रख रहे हो, तो aren't you like super excited about that? Yes, Ashish, thanks, of course. Okay, Adarsh, again, big up. Okay, Pogmentary is so good, but it got 1 out of 10. Wow. I didn't watch that either, Mudit. Great show, thanks as well. Amazon Prime है भैया. Okay, चलो यार, Amazon Prime big up हो जाए. Okay, अंकित भैया, hope Jesus scores but Arsenal lose. Okay, so डेरेन के लगता है FPL टीम में है, लेकिन Jesus काफी सारे FPL टीम्स में है. तो looks like he's saying that Jesus is going to score and against Arsenal. You know what? Against Leicester. You know, tactically आप देखिए ना, तो in my opinion, लेस्टर का डिफेंस इज अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज जेसूस प्लेज एट फ्लोटिंग रोल ना, मतलब यही है मेन. और इवन एट विंग बैक, द फैक्ट दैट रिकार्डो परेरा उनके सब्स्टिट्यूट नहीं है, इवन टू काइंड ऑफ चेंज समथिंग. हाँ, दे हैव वेरी गुड फुल बैक्स इन कस्तानिया एंड जेम्स जस्टिन, आई हैव नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई, रिकार्डो परेरा जो पेस लाते हैं ना, आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट एलिमेंट. वहां पर आई डोंट नो, द क्रिएटिविटी ऑफ जिंचेनको कैन काइंड ऑफ गेट ओवर देम. और मार्टिनेली, इवन यार मार्टिनेली काफी अच्छा कर रहे हैं. तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आर्सेनल डेफिनेटली लुक्स फेवरेट. ले लो 2-0 मेरे तरफ से. ओके, एंड यस आशीष, आपका भी मैं स्टार कर दिया हूँ. जेसस गुड सर्वेंट सिटी बट हालैंड डिफरेंट ग्रेवी. या फेयर इनफ. ओके, केडीएच वुड बी द प्लेयर टू सी दिस सीजन. माय फेवरेट केडीएच कौन है भाई, बोल दीजिए. यार फुल फॉर्म बता दीजिए, मेरा थोड़ा ब्लैंक हो गया. कोई नहीं. केडीएच यार, आर यू टॉकिंग अबाउट केविन द हाइलाइट, केविन द हालैंड? आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई मिस समथिंग देयर, बट एनीवे, कम ऑन पीपल. इतने लोग ने किया है कमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शंस. यार यहाँ पर मैं बोलूंगा आर्सेनल वर्सेस लेस्टर. मैं क्विकली मैं बताता हूँ दैट इन टर्म्स ऑफ हेड टू हेड भाई, आर्सेनल एज मच एज लेस्टर हैज एक वाडी है नंबर. मैंने बोल रहा था ना, लास्ट 3 प्रीमियर लीग गेम्स आर्सेनल हैव बीटन लेस्टर. यस, हाँ, एक होम में था, एक 2 अवे था. तो आई थिंक आर्सेनल हैव देयर नंबर, लेस्टर्स नंबर, और फॉर्म भी है. तो आई थिंक आई विल ऑल्सो गो विद आर्सेनल. यस, यहाँ पर कुछ सरप्राइज नहीं होने वाला. आई विल से आर्सेनल, बट क्लोज होने वाला है. आई कैन सी आर्सेनल कंसीडिंग, एज मच एज हम विलियम सालिबा के गीत गा रहे हैं, बेन वाइट के गीत गा रहे हैं भाई. some at some point there has to be a point that you need that presence. Or again, Leicester have, they might miss Harvey Barnes. Definitely Harvey Barnes is a huge miss, but फिर भी यार Ben White playing right back against say Leicester versus say against Crystal Palace, I think it is better situation for Arsenal. So I'm going with 2-1 to Arsenal में दे रहा हूँ. Let's see आप लोग क्या बोल रहे हैं. Okay, yes, Alex Johnson, I'll come to that. We can't sell Fofana for less. The reason is simple. We paid 40. There's a sell-on clause with Saint Etienne. Okay. So of course 80 to 85 भी कम लग रहा है to agree any deal. Reluctant क्यों कि we need to buy one. Okay, fair enough. That's a fair point. Again, from Leicester's point of view, absolutely fair. आप बोलिए, लेकिन is Fofana worth paying 85? Let me know in the chat. I see Arsenal winning easily. Look how they bottled in last match 2-1 easy. Okay. Yeah, you mean Leicester, right? Yeah, Dewsbury Hall बहुत yeah, exactly. KDH वो है भाई, काफी अच्छा प्लेयर है. He is a good player. In fact, I remember seeing Akash's tweet as well. Lot of Leicester fans are calling to him be the captain. लेकिन I think it's too early. But at the end of the day, यार, he has that element. एक है proper English football का element उसमें. Okay. I see Arsenal winning easily. Look how Leicester bottled the last match 2-1 for me. Okay, fair enough. Leicester will lose. Wow, same. Okay, fair enough. Yeah, KDH, Academy graduate, loan to Luton, won all individual end of season awards. I was monitoring and covering him last season. Really flashes of old school midfielders, Lampard-esque. Wow, that's big kind of shoes to fill. Yes, of course. Otherwise, John Terry, that's Ashish will tackle. Come on, people. Kevin De Haaland. नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मुझे कोई नहीं. ओके, सो पीपल, मैंने गया है 2-1 के लिए. और यहां पर इज टाइम टू गेट द बिग टॉक्स, बिकॉज बिग टॉक्स क्या है भाई? इट इज चेल्सी अगेंस्ट टॉटनम. यस, इट इज थॉमस टुकेल अगेंस्ट एंटोनियो कॉन्टे. तो यहां पर पहला सबसे न्यूज क्या है? सबसे पहला न्यूज ये है कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दैट, लेकिन थॉमस टुकेल क्लियरली सेड I won't believe Antonio Conte. And Antonio Conte, kind of is playing the games, etc. तो बोल रहे हैं Antonio Conte झूठ बोल रहे हैं, मतलब मजाक में बोल रहे थे. But I think yes, it's a Sunday game, लेकिन it's the biggest game of the season, so of the weekend. तो इसीलिए हम वो बात कर रहे हैं. Second, भाई, again, let's have more people in.
so that we can easily discuss. And मैंने काफी स्टार किया है comments. And yes, good afternoon to Doug. Good afternoon, Doug. The way you have been kind of coming back to YouTube. Hopefully, you'll do great as well. But we'll certainly sync up in the season for sure. Yes. Okay. Again, Alvarez के बारे में Alex Johnson. I've seen a lot of comments. I would say hold on. We are discussing a certain game. So people, we have finished Arsenal Leicester. Let's try and focus on the game क्योंकि यार otherwise chat will be everywhere. मैं हर चीज के बारे में बात करूंगा. It will be everywhere, right? तो थोड़ा सा organize रखते हैं stream because these are going to be weekly streams. Your preview prediction stream. हाँ अगर guest है तो यार we can talk about things. But अभी यार मैं अकेला हूँ तो it's difficult for me to manage otherwise. I hope that's fair, right? So let's go with Chelsea Spurs. So Chelsea Spurs again coming back to the press conference. Bad news. In fact, the worst news is Kovacic is not there. Yes, for people who've joined late, Kovacic is injured. उनकी knee injury हो गई है. मैंने एक पोल डाला था आज, ठीक है, on Almighty Blues FC, and I had thought that Kovacic is going to play. And in fact, ज़्यादातर लोग सोच रहे थे भाई Kovacic should come in place of Jorginho. Kukurea should come in place of Chilwell. Maybe Broha comes in place of Havertz. And maybe Chalobah comes in place of Aspi. I don't know. आप लोग बोलोगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लेकिन that is bad news that Kovacic is not there. लेकिन the fact is Chelsea Tottenham, why do you think that it is basically, yes, Spurs ने पागलपंती की थी last weekend में, probably the performer of the weekend in terms of the team along with Man City, I would argue that. लेकिन yes, Kulusevski one of the players of the weekend 100%. Why? It was just one weekend. The fact is they are traveling to Stamford Bridge. Yes, it's not a ground जहां पर उन्होंने इतना अच्छा भी किया है. तो that is why मैं बोलूंगा that it is kind of even. Yes, वो लोग फॉर्म में, बट it's an our home and it's Chelsea versus Spurs जहां पर हम काफी हकते नहीं हैं. That's what the common trend has been. तो we will continue with that. देखिए यार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्लियरली हेड टू हेड देख लेते हैं ना. तो हेड टू हेड में आई डोंट, does anyone know when was the last time Spurs beat Chelsea in a Premier League match? I don't even remember. Yes, I hope मैं जिंक्स नहीं कर रहा हूँ, but it is how it has been. मतलब not only हम स्पर्स के 3-point लेन और व्हाइट हार्ट लेन को 3-point लेन बोलते थे, but the fact that even in Stamford Bridge we have been doing brilliantly. Last season में we met them 4 times. Yes, twice in the league, twice in the Carabao Cup semi-finals. Why? We didn't let them score a goal. And that is how good we were. ठीक है, तो you have to say that Chelsea has a number over Spurs, but 7 months is a long time in football, very long time in fact. ठीक है, last time almost 6-7 months हो गए from the time we met them in the Carabao Cup semi-finals, right? Definitely मैं बोलता हूँ that is where Spurs ने change की है. तो I think it will be a very close match. Tactically मैं बोलूँ तो the fact that Kulusevski pings those ball in the fast post, वहां पर we have to stop those crosses. We definitely have to stop those crosses. Or that is where our new talisman Koulibaly comes in. Yes, Koulibaly. और जो खेलेगा लेफ्ट बैक में, तो कौन खेलेगा लेफ्ट बैक में आप लोग बोलिए. इज इट गोइंग टू बी चिलवेल और इज इट गोइंग टू बी कुकुरिया? ठीक है, मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ साथ साथ में. Yes, team news. We just have that news अभी तक यार. We have Kovacic out. I think Spurs का lineup is pretty good. I don't think there's any going to be surprise. हाँ, with whether I think Sessegnon starts or maybe Perisic starts, मेरे ख्याल से वहां पर थोड़ा सा हो सकता है. Olivier के by the way remains on the sidelines, लेकिन otherwise they are good. Bissouma भी खेले थे few minutes, so I don't think they start. लेकिन देखते हैं. तो मैं यहाँ साथ साथ में बनाने वाला हूँ अपना टीम. अगेन आप लोग बोलिए ये है टीम जो मैं चाहता हूं, और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं साथ साथ में. यस, एलेक्स जॉनसन विल कम टू एवरी गेम. प्लीज रिमेन पेशेंट, बिकॉज अगर मैं खाली प्रेडिक्शन वीडियो करूंगा तो मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके प्रेडिक्शन वीडियो दे देता, राइट? तो द आइडिया इज टू कवर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन दीस गेम्स इन द रीसेंट पास्ट. What is the injury news? It might help in the FPL team. It might help us explain the tactics. We'll come to the predicted 11s, then we'll come to the predictions and a lot of other things, right? So that is the entire preview जो हम करते हैं भाई. मतलब हर एक मैच का करेंगे. There are so many matches. So अगर आप वेट करो तो बढ़िया है, अगर नहीं भी वेट करो तो भाई तभी बढ़िया, लेकिन लाइक डेफिनेटली करना. अभी यार हम बात कर रहे हैं सेकंड मैच ऑफ द वीकेंड. जो हम सेकंड मैच बोल रहे हैं वो है चेल्सी वर्सेस स्पर्स. वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आर्सेनल वर्सेस लेस्टर. ठीक है, तो यहाँ पर चेल्सी का फॉर्मेशन एवरीवन, आई थिंक लास्ट वीकेंड जो खेले थे चेल्सी ने, आई थिंक 3-4-3 खेला था हमने. और 3-4-3 में बेसिकली लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. साथ साथ में शेयर कर लेंगे सो दैट यू गाइस कैन से. Okay. Oh, Jordan, nice to see you, bro. Long time no see. How are you?
Okay, Liverpool fan in the house, and yeah, yes, we'll come to Liverpool predictions as well. Don't worry about that. लेकिन I'll try and uh, put the Chelsea 11 जो होना चाहिए. What should be the Chelsea 11 against Spurs? तो by people, let me know striker man. Striker मतलब देखो, the fact is center backs of Spurs क्या है? Center backs of Spurs are basically Romero, Eric Dyer and Davis. तीनों ही बेसिकली आप देखिए थोड़ा फिजिकल है. इन माय ओपिनियन दे आर क्वाइट फिजिकल. यस, नॉट रोमेरो मच, लेकिन एरिक डायर इज डेफिनेटली. तो डोंट यू थिंक दैट ब्रोहा स्टार्टिंग इन दिस मैच विल बी आस्किंग अ बिट टू मच? थोड़ा सा अनफेयर रहेगा. देन विल स्टार्ट जजिंग एज चेल्सी फैंस और ईपीएल फैंस जनरली. तो डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी वेरी काइंड ऑफ अनकॉल्ड फॉर काइंड ऑफ सिचुएशन? तो ब्रोहा कैन कम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट इन माय ओपिनियन. तो मैं तो बोल रहा हूँ हैवर्ट्स को शुरू करना है. आप लोग बोलिए. यस, एवर्ट्स ने हगा था लास्ट वीकेंड, लेकिन अगर आप एक एक वीकेंड में परफॉर्मेंस देख के ड्रॉप करने लगे तो भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? एब्सोल्युटली. एंड यस पीपल, सो it's not an app, it's a website. Again, I will share it once I finish this conversation, but let's at least get to that. So I would hope that you get into the conversation and actually suggest what lineup we go for. But again, do not forget to subscribe to both our channels. The links are always in the description below, as well as like the stream so that we have more people. Chalo, people, what do you think? Forward line. लेट्स सी. मैं अलग ही डायरेक्शन में बात करो, चार्ट अलग ही डायरेक्शन में बात कर रही है. लुक्स लाइक दे आर डेफिनेटली इन देयर जोन, बट कोई नहीं, विल कम टू योर कमेंट्स फॉर श्योर. देखिए भाई, लेफ्ट विंग और राइट विंग, प्रीटी श्योर अगेंस्ट स्पर्स वी नीड टेनासिटी. बट टेनासिटी का डेफिनेशन है अपना मेसन माउंट. आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम. these pick by themselves. Sterling, और yes, by the way, Raheem Sterling को पूछा गया था, do you consider yourself as a striker, a false nine or a winger? He थोड़ा सा मतलब he inclined towards him being a winger. So that was very interesting for me कि क्या है. आप बोलिए, मतलब do you agree with that? Tuchel was also asked a question in the press conference, or Tuchel said by he's best in the last line of attack. So that means he's like 3-4-3 mein he'll be floating. Simple as that. Up front, okay, Sterling and Mount is what you're saying. Fair enough. And left midfield, by people, left wing back कौन होगा? आप बोलिए. मतलब, do you feel that Kukurea has done enough in that one appearance, or do you feel that Chilwell won that penalty? हाँ, Chilwell wasn't 100%, but do you think Chilwell should get the nod or Kukurea? मतलब again, it's Spurs. Spurs का right wing, who is there? It is Kukurea. Sorry, Kulusevski. So Kulusevski is there with Emerson Royal also bombing on. So is Chilwell having that physical, एक ready है after the injury to kind of, tackle those two? I think along with Koulibaly, he is. Also, again, I don't feel that हमें change करना चाहिए. अगर चिलवेल को अभी ड्रॉप करते हैं ना, in my opinion, तो चिलवेल के लिए बहुत नाइंसाफी हो रही है, because I think he has started the season, and yes, he won a penalty. He didn't do overall very good. Yes, I agree. And we have paid what, 55 million for Kukurea. But don't you think it is थोड़ा नाइंसाफी with Chilwell? Because अगर वो अभी बेंच पर चल जाता है तो how will he pick up his injury? How will he get back to form? It is so difficult. You would say maybe Champions League matches, but again, is it too I believe it's too unfair. लेकिन आप लोग क्या बोल रहे हैं? Okay, Sai Pritham is saying Kukurea will be starting. Kukurea, Aliana Chik, Chilwell for the first 60 minutes. I agree with Jangster Junior. Kukurea has better place and physicality. Yeah, I agree. लेकिन अगर हमें चाहिए Chilwell to be in the best physical form, ठीक है, अगर हम अभी ड्रॉप करते हैं तो मे बी यार आफ्टर इंजरी जो ही इज ट्राइंग टू बिल्ड, उसका मोमेंटम चल जाएगा. तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड दैट अगेन. तो आई थिंक चिलवेल शुरू करने चाहिए. के बाद लाएंगे फॉर डिफेंसिव टर्न. ओके, तो आशीष बोल रहे हैं चिलवेल को लाएंगे फॉर डिफेंसिव टर्न. आई फील द अदर वे अराउंड. कुकुरेया इज एज एन पेसियर राइट नाउ एज थिंग्स स्टैंड. कुकुरेया इज हैविंग दैट काइंड ऑफ स्पार्क. तो हमें चाहिए स्पार्क ऑफ द बेंच, और आई फील टुकल ऐसे देखते हैं. अगेन आई एम ट्राइंग टू रीड बिटवीन टुकल एंड माई सेल्फ, राइट? Kukurea wanted City and now he's saying he wanted Chelsea. He's a clown. That happens with players, yaar. Come on. He cannot say he didn't want Chelsea. Come on, he's doing well. Bhai, I know आप लोग disagree करोगे mostly, लेकिन I think couple of people are agreeing with me. देखिए, Chilwell for me off the bench, I don't think it's fair. He is coming back from injury or putting in a situation जहाँ पर we are defending. I don't think it's fair. I think starting, yes, we are putting pressure. Lekin he can get into the game. He can get into basically his form. हाँ, eventually Kukurea will come. मैं तो वो भी बोल रहा हूँ. Eventually Kukurea will start games for us in Premier League. यही मैं बोल रहा हूँ in terms of left wing back. लेकिन after one weekend you're dropping Chilwell. Yes, Kukurea maybe wasn't 100% ready with our system.
लेकिन दैट्स जस्ट मी. हाँ, यहाँ पर सेंटर बैक में आएंगे डेफिनेटली, राइट विंग बैक में भी आएंगे डेरेन. लेट्स होप चिलवेल गेट हिज फॉर्म एज सून एज पॉसिबल. या अगेन अगर हम ड्रॉप करेंगे चिलवेल अभी, तो आई थिंक ही मे नॉट गेट दैट फॉर्म एवर. आई रियली बिलीव दैट. आई नो आई एम सेइंग अ बिग स्टेटमेंट, लेकिन वो जरूरी है आफ्टर लॉन्ग टर्म इंजरी इन माय ओपिनियन. यस इट्स स्पर्स, इट्स अ पोटेंशियली टॉप 4 चैलेंजर, लेकिन आई थिंक अगेन ही वन अ पेनल्टी, तो थोड़ा तो मेरिटोक्रेसी होता ही है. बाय राइट मिडफील्ड, व्हाट वुड यू से? यहाँ पर अगर मैं ये बोलूं आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं. ये देखिए भाई मेरा, this is what I'm going with, because again remember they have a Heung-min Son. Heung-min Son है, तो I am going with our Champions League lineup जो होता है काफी. देखते हैं अंकित एसपी एज राइट सेंटर बैक एंड और राइट विंग बैक बिकॉज सॉन वाज बिल्कुल बिल्कुल. तो दैट इज द पॉइंट आई एम मेकिंग. तो यस अगेन लेट्स सी व्हाट यू ऑल से फॉर राइट सेंटर बैक, राइट विंग बैक. आई थिंक probably यहाँ पे I think let me just maximize this. This is what I've put. Okay, Ben, Reese, Kuku, who do you want if Chelsea needs to play on offensive tactics? Eventually, I would definitely want Kukurea to be a starter. I think Ben Chilwell is defensively very sound after coming to Chelsea. He wasn't that in Leicester, but I think after coming to Chelsea, he's defensively become very sound. So I think attacking wise में मैं जाऊंगा Kukurea के लिए, because Kukurea दोनों कर सकते हैं. और द फैक्ट दैट वही है, इट्स क्लियर द फैक्ट दैट वी पेड सो मच. यस, चिलवेल के लिए भी पे किया था हमने, लेकिन कुकुरेया starts game on a positive note. वो थोड़ा सा डिफरेंस है कंपेयर टू चिलवेल, स्पेशली चिलवेल कमिंग आफ्टर इंजरी. लेकिन वही है, राइट नाउ चिलवेल को अगर हम बेंच करेंगे भाई, उससे ना इंसाफी है, बिकॉज हाउ विल ही गेट अ चांस टू कम बैक टू फॉर्म? देन इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट देन, राइट? अग्री. चलो नाइस नाइस. रीस जेम्स, ओके. तो others to are kind of pick themselves because Kovacic available नहीं है. Would you get a Gallagher against tenacious Spurs midfield? I think Bentancur खेलेंगे उनके, और if I'm not wrong Højbjerg खेलेंगे. So do you see that we should get Gallagher, or I think Jorginho, the fact that he scored the penalty bhai, or he's a vice captain as well, or we need leadership and voice on the pitch, तो Jorginho को शुरू करेंगे कि कांटे तो is a no brainer, तो कांटे को डाल देते हैं. Against Spurs he had a terrific game last season जब हम 3-5 गए थे. और by the way Hakim Ziyech had a brilliant game. Remember Hakim Ziyech had a golazo scored against Spurs, so he'll be missed but he'll come off the bench. मैं बोलूंगा yes, अभी तक गए नहीं है, is in Chelsea itself. Left centre back Koulibaly without a shadow of a doubt, and central centre back I think again Thiago Silva in such a big game has to play. और वो मैन ऑफ द मैच थे भाई लास्ट गेम में भी, क्या बोलोगे उनके बारे में भाई? he's like fine wine. But anyway, what are you going for central midfielder people? Again मैं बोलूंगा because of the fact that यार हमें एक पासिंग इन बिटवीन द लाइंस चाहिए ना, तो वहां पर जॉर्जिनो इज अनफॉर्चुनेटली आवर ओनली गाय विद कोवाचिच इज एमिशन. तो हमें चाहिए जॉर्जिनो फॉर दैट, अगर हमें अटैक करना है स्टैमफोर्ड ब्रिज एंड वी नीड टू पास टू स्कोर दैट गोल. तो ये है मेरा लाइनअप. What do you all think about the lineup? Let me know in the chat. This is my predicted lineup. Yes, for FPL also काम आएगा, तो definitely you can go for it. In my opinion, knowing Tuchel जो वो changes करते, yes वो changes करते काफी, लेकिन again because it's Spurs, that is the reason वो tactically change करेंगे with Aspi going right wing, Chilwell staying, and Howard, Sterling and Mount rotate करेंगे भाई front three में. That is going to happen. Let's see what you all are going for. Let me see क्या आ रहे comments. Okay भाई, thanks for subscribing यार. Thanks for subscribing by the way. Because I'm in subscriber mode. Anyway, and Bhaiya, why Tuchel is trying 4 at the back? Okay, what's the advantage at 4 at back than 3? Well, you know what? देखिए, against Spurs, I think I'd rather go like for like. If you go like for like, it's better, because at the end of the day, yaar, we have to make sure that we are understanding the game. तो शुरू में like for like जाएंगे, लेकिन eventually मुझे लगता है De Jong, yes, by the way, Frankie De Jong, will he come to Chelsea? Now things are looking weak. Things are looking weak. मुझे लगता है he might just stay in Barca, reduce his wages. तो yes, the reason what हम जा रहे थे डियोंग के लिए, one was succession planning for Jorginho. Kante, world class midfielder, आप मना नहीं करोगे, but at the same time, eventually 4 at the back जाना चाहते हैं. क्यों? Because उसमें हमारे जो अटैक में हम हग रहे हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा अटैकर मिलता है. दो नंबर 8 एक सेकंड बॉल्स विन करने के लिए वी आर हैविंग एन एक्स्ट्रा पर्सन. So that is what it helps साई, लेकिन hopefully we'll come back to that. कोई नहीं. Sterling annoyed many City fans with his missed chances so often, but wish him luck. Yeah, I'm seeing a lot of tweets floating around about Sterling. Like in fact, I saw tweets from a City fan saying that he's shit. Well, really, man, come on, man. I wouldn't do that for a Chelsea. Like he's the all-time. Again, people correct me if I'm wrong. He's the all-time. Yes, City had a history as well.
He's an all-time Manchester City second in goals and assists. Correct me if I'm wrong. With that record, as a City fan, how can you call him shit? Yes, he might not be as good in finishing as maybe an Aguero, nowhere close. And but he's not a striker anyway. He was never a striker. He's not a striker. So Sterling पर हम depend करते, that's not good. Alex Johnson, I agree, but he has improved a lot over the last few years. Yes, he's not the finished article yet because you would expect more being an England international who starts. फिर भी मैं बोलूंगा it's काफी good. अच्छा चलो यार, I think let's see, one second people, let me just tackle this person for now, but let's see. ओके मॉड्स यार टाइम आउट दे दो यार मॉड्स, हो सके तो टाइम आउट दे दो आप. आई थिंक दैट्स द वे बिकॉज आई थिंक पीपल, चलो कोई नहीं, थैंक्स यार, थैंक्स आशीष. भाई we cannot give them footage. People who are trying to spoil our career in YouTube, we cannot give them footage because they are jobless. But anyway, let's not go there. Okay, where would you fit Kovacic in this formation? Kovacic unfortunately does not play because he's injured, but if he comes, he definitely is one of the number 6. He's a ball carrier, he's a passer as well, he has improved a lot. और भाई लास्ट सीजन में थोड़े गोल्स भी किए थे. अलोंसो तो बढ़िया भाई. यस, यहाँ पर न्यूज आई है दैट अलोंसो टू बार्सिलोना इज मोर और लेस डन. यस, लीवर 4 एक्टिवेट कर लिया है और दे आर वर्किंग ऑन अलोंसो डील, वो होने वाला है. और उसके कारण टुकल ने एक्सेप्ट किया है दैट ही इज नॉट इवन ऑन द स्क्वाड. ही इज नॉट इन द स्क्वाड एज कोवाचिच एज वेल. Yeah, Sterling not shit though. Actually, these are the words of City fan. Right, but anyway, Ankit haters, yeah, bilkul, absolutely. Talking about much love, bro. And of course, yeah, people, do not forget to like, share, subscribe. And now it's the time for prediction. By the way, मैंने बोला है, I don't even remember when Spurs beat Chelsea last in the Premier League. Is it going to be a first? I hope not. मैंने जिंक्स किया हो, लेकिन Chelsea ने काफी अच्छा किया भाई. This lineup जो मैंने दिखाया अभी, what do you think based on that lineup? Are we doing enough? Because Spurs का Kulusevski, one of the परफॉर्मेंस ऑफ द वीकेंड. सॉन और केन को लास्ट पूरा सीजन में हमने चुप रखा था, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे थे लोग, भाई व्हाट इज द सीक्रेट, एंड टुकल सेड व्हाई वुड आई टेल यू. ऑफ कोर्स. एंड यार कब कुछ जर्नलिस्ट मतलब क्या क्वेश्चंस पूछते हैं यार, कम ऑन. कुकरेया विल प्ले डेफिनेटली यार, ही विल कम ऑन विद 5 सब्स्टिट्यूशंस. द फैक्ट इज यार, इफ वी आर नीडिंग, और rather in any situation, I think कुकरेया आएंगे, एक घंटे के बाद आएंगे. That's my call. Sterling is second highest in Premier League and in top 10 of all time. Wow. See, and then this is what after that he gets from loyal City fans, that is shit. That's just again, respect if they've seen them. Yes, उनका conversion ratio is not good as what आप expect करोगे, but at the same time he scored a lot of goals, right? But at the same time मैं ये भी बोलता हूँ, we cannot depend on Sterling to score all our goals. ये भी मैं fact बोल रहा हूँ. Kukurea might be one season wonder. No, Andy, why do you think so? Kukurea, I think right now he is really improved in the last season. So I don't see any reason why he should be a one season wonder. He has all the elements to do well, in my opinion. Reece James को as defender नहीं, but right midfielder देखता हूँ. Okay, fair enough. Again, the fact is because उनका जो left wing है Sessegnon and Son. Remember, tactically क्या करते हैं? Everyone, I'll tell you, explain you tactically. So what happens is Kane drops back. ठीक है, in a 3-4-3 formation. Kane drops back and it creates a space जहां पर Son जाते हैं center forward role, and that is where Sessegnon has a left wing. तो वहां पर you have to tackle with Son's space, and is good on the left foot. Son's space and finishing on the left foot, plus Sessegnon's left foot cross. So we need someone who's physically well as pacey. तो वो combination Reece James gives us better compared to maybe an Aspilicueta at this point in time. और इसलिए मैं जा रहा हूँ for Reece James as center back, but Aspi is required in right back because against Sessegnon मैं देखता हूँ, yes, Perisic might start, वहां पर थोड़ा सा mismatch होगा height में, but I feel Sessegnon will start. Bhai, he had a fantastic performance. Perisic will come on like Kukurea bhai after 60 minutes. तो मैं देखता हूँ यहाँ पर Aspi, because of his experience, might just be able to tackle थोड़ा बहुत Sessegnon and get a few fouls in. KDB is world class, yeah. Okay. या मैंने उसकी बात की थी अभी. दिव्यांशु, व्हाट टाइमिंग भाई, क्या टाइमिंग. मैंने उसकी बात की कि यार 4th लीवर अभी एक्टिवेट हो गया भाई, अलोंसो जाने वाला है एंड मे बी सिल्वा. भाई सिल्वा का अभी भी यार मुझे डाउट हो रहा है. मैं तो बोलता हूँ दिव्यांशु, इट्स गोइंग टू बी फ्रैंकी डियोंग स्टेइंग इन बार्सिलोना. ये मुझे लग रहा है अभी. हाँ, whether he will play or not was a different element, लेकिन वो he might stay.
दैट्स माय और ये एक प्रेडिक्शन है नो एवरीडे चेंज होती है बट आज के लिए वो है व्होज योर टॉप फोर प्रेडिक्शन अगेन एलेक्स जॉनसन डू चेक आउट आवर सीजन प्रेडिक्शंस हमने किया है फॉर सेरिया फॉर प्रीमियर लीग फॉर ला लीगा so do check out we have had a separate stream altogether the reason I'm not attending to this is because there's so much to talk today but we'll come back to this Sterling is in my underrated 11 haha wow Chelsea should go 4-3-3 yes I hope so as well lekin right now do we have that understanding in between players nahi Ziyech he did very by the way talking about 4-3-3 I think in the Carabao Cup hum gaye the 4-3-3 against Spurs Ziyech played really well in the second leg in last year as well lekin in the league as well lekin bhai हमने जो 3-5-2 में किया था ना कांटे हैड अ ब्रिलियंट गेम लास्ट सीजन आई थिंक दैट वाज बेटर एंड द फैक्ट दैट अभी यार वो फॉर्मेशन स्पर्स अच्छा खेल रही तो वी हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट इवन दो इट्स अ स्टैमफोर्ड ब्रिज अरे रहने ऑल गुड रहने लेट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी you know Arsenal versus Leicester but you can obviously give your predictions but people come on prediction time यहाँ पर Chelsea against Spurs मैं दे रहा हूँ Chelsea को आई थिंक ओके लेट्स थोड़ा सा ब्रेक करते हैं भाई आई नो लास्ट मैच में वी डिडंट डू ग्रेट अगेंस्ट एवर्टन बट इट वाज एट गुडसन पार्क जो हमारा हुडू ग्राउंड था अभी आई फील स्पर्स ना तो थोड़ा एक एलिमेंट होता है दैट वी हैव ऑलवेज डन वेल अगेंस्ट स्पर्स तो मैं बोलता हूं मेसन माउंट स्कोरिंग मेसन माउंट इज गोना स्कोर एंड स्पर्स डेफिनेटली गोना स्कोर हम 4 मैचेस तक चुप लगाए थे केन और सॉन को आई थिंक दिस मैच में वो दोनों कनेक्ट करेंगे और एक गोल मारेंगे मैं बोलता हूं 1-1 यस Unfortunately, I'm going for a 1-1 draw. Maybe you would say that Chelsea are favorites at Stamford Bridge. Maybe you would say that Spurs form team है. Let me know आप लोग क्या बोल रहे हो. Let's see क्या बोलोगे आप लोग. Okay. Any transfer update from Chelsea? भाई आशीष वही है अभी transfer update that the fact is we are still interested in Aubameyang. लेकिन as much as I think, I don't think Barca can get rid of both Depay और Aubameyang. तो I don't know why हम waste करें time अगर हम waste करें तो. Fofana का ब्रेंडन रॉजर्स ने बोला है that we are definitely not matching what they are expecting or it's they don't want to sell versus he's not for sale थोड़ा change हो गया तो hopefully Fofana आ जाएगा in 1 or 2 weeks लेकिन अभी के लिए Fofana is not coming to Chelsea because we are not able to give more than 80 million as per reports we might go for an 80 plus million bid देखते हैं and the third one is De Jong का unfortunately Chelsea wait करेगी until we get a green signal from De Jong and Barcelona अभी तक आई नहीं है De Jong and his lawyers are very very insistent कि वो रहना चाह रहे हैं बार्सिलोना में तो आई थिंक ही इज गोना स्टे विद लो वेजेस और खेलेगा कि नहीं दैट डिपेंड्स ऑन बार्सिलोना एंड जावी ठीक है स्टर्लिंग हाँ लेकिन स्ट्राइकर सिचुएशन आज पूछा गया था ओबामयांग के लिए जवाब नहीं दिया है टूकल ने तो मुझे लगता है CR7 तो चेल्सी अभी स्टोरी बाकी है लेट्स सी आज के टाइम ओवररेटेड हो चुका है इन 2016 ही वाज अप्रिशिएबल किड ओके Okay, I don't know when did I disrespect anyone, man. I don't know when did I respect anyone. Absolutely. कोई नहीं. भाई, Rene says 3-2 to Arsenal. Oh, wow. That's interesting. 4-0 Spurs. Wow. Rene, क्या हो रहा है भाई आप थोड़ा सा salty हो रहे हैं Chelsea with going for Fofana what 4-0 Spurs. Wow. Let's see. Man, Chelsea are not in form. I understand that. Chelsea versus Tottenham, Ankit bhai, sorry, I think Chelsea might lose this one. We have seen how unorganized Chelsea's defense was and Kante too isn't in best form. Spurs to win 2-1 or 2-0. Okay, koi nahi yaar, it's a prediction, absolutely, I'll take that. Okay, Chelsea Everton is the highlight game of the week. Must hoga, looking forward to it. You mean Chelsea Spurs, Devesh, koi nahi. Much love to you. And Jorginho might be exposed badly. That's the point. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना Kovacic will be missed in this game. और इसलिए मैं पूछा था, do you see Gallagher coming on early? It is quite possible. Remember, Gallagher has done well in the last season as well. बहुत अच्छा किया है. Frankie De Jong for 80 million is going to pinch me. Why not go for Declan Rice at his price? Maybe we need a ball player is what Tuchel is thinking. तो वहाँ पर I know Declan Rice भी कर सकते हैं, but box to box with ball playing and passing, Frankie is more proven at the international level. तो वहां पर ही इज अवेलेबल और फ्रैंकी इज मच मोर काइंड ऑफ अडेप्टेबल हाँ डेक्लन राइस खेल सकते हैं सेंटर बैक में बोलोगे लेकिन आई थिंक फ्रैंकी ज्यादा रिसेंटली खेले तो वो है थोड़ा सा चेल्सी डिफेंस एंड मिडफील्ड वोंट बी एबल टू हैंडल द लाइक्स ऑफ कुलुसेव्स्की सॉन एंड केन देखते हैं दिव्यांशु अगेन लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक ट्वाइस एज अ चेल्सी फैन आई वुड से लेकिन हाँ आई अग्री विद सॉन एंड केन को पूरे सीजन में हमने लास्ट 4 बार मिले थे और चारों बार हराया था स्पर्स को ठीक है और वो भी यार आई डोंट थिंक स्पर्स इवन केम क्लोज इन वन सिंगल गेम हाँ मे बी सेकंड लेग ऑफ द कैरेबो कप पर तब तक हम जीत गए थे तो दैट इज व्हाट आई वुड से तो इसीलिए मैं बोल रहा था यार इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप देम साइलेंट अभी रिपीटेडली तो आई गेट दैट लेकिन कुलुसेव्स्की टैक्टिकली आई डोंट बियांशु एंड अदर्स इफ यू सॉ मैंने डाला है
I've changed a little bit in the tactics. So let's see if it works. We should get rid of Pulisic. I think Pulisic को 5 और महीने देंगे until the World Cup, and let's see how he kind of performs then. Let's see. Chelsea refused to sign Fofana. TT said it himself. Okay. Um, Chelsea's refused to sign Fofana. You know what? No, I don't think so. उन्होंने मना किया कि no, we are not. In fact, he was asked, "Do you need a defender?" He said no, no news about that because शुरू हुआ था first question उसमें यार how it's actually disrespectful अगर वो बात करे ना a player of another club. So I think it respected Leicester and Fofana saying that no, at this point in time we cannot discuss about that. I'm not going to tell you. That is what the answer was. I don't think it said that we don't want Fofana. No, that was not the answer, Rene. But he was also then asked that do you need a defender. He said no, we can do with another centre back. So I think clearly हम देख रहे एक और centre back. हाँ, लेकिन the fact is Ampadu is linked with Empoli or Emerson is now linked as well. तो देखते हैं if we can maybe have someone else. I don't know. Let's see. But we need a centre back for sure. Maybe even left-footed. Okay. One of the people said Sterling to Chelsea mistake. I always used to hate him and call him overrated, but Sterling was playing so good against Everton, made me eat my. Wow, Goofy. That. I know it's just one weekend, but anyway, he has quality. Whether we can rely on him, that's a big question. Tottenham easily win against Chelsea. Wow. देखते हैं भाई कैनेडी को चांस तो थोड़ा you know what मैंने सुना है आशीष कैनेडी एंड कपल अदर्स यार हम कॉन्ट्रैक्ट एंड करने वाले बिकॉज इतने सारे वेजेस वेस्ट जा रहे हैं इट नॉट बी गुड बट इट्स व्हाट इट इज कोवाचिच कांट इज इनफ टू हैंडल स्पर्स कोवाचिच इज इंजर्ड unfortunately goofy very bad news that Kovacic is a crucial midfielder in like build up and controlling midfield bilkul I was hoping that Kovacic plays but Jorginho might have to play this game considering हमने इतना changes नहीं करना है because of Kovacic being injured wow let's see yeah matlab on form you can say that but again football is about recent vibes no again thanks for joining yaar matlab hope आपने like कर दिया stream को and you have checked out both our channels so subscribe to both इतना मैं जरूर बोलूंगा दैट यार लास्ट सीजन की बात थी हमने 4 बार हराया था स्पर्स को और मुझे तो याद नहीं लास्ट 7-8 बार हमने कंटिन्यूअसली स्पर्स को हराया तो आई थिंक देयर इज अ थिंग अबाउट चेल्सी स्पर्स जहां पर हम डोमिनेट करते आ रहे हैं बट आई हियर यू ऑन फॉर्म डेफिनेटली स्पर्स लुक गुड Chelsea gets Sancho is better than Fofana Rene I hear you I know why is enough to pocket Kane wow interesting okay people वहां पर काफी हो गए Chelsea Spurs की बातें और we will try to move on to other games as well of course there are City fans in the house there are Manchester United fans in the house I know that or of course there are Liverpool fans as well I'm assuming right तो यहाँ पर क्या लगता है people next game and yes there are other leagues as well हम quickly discuss करने वाले हैं but again remember there is a prediction league for members so members if you would or people who would like to get a prize at the end of the season for predictions you need to be a member and predict और कैसे करेंगे at the end of the video just comment 10 matches का प्रीमियर लीग में क्या होगा स्कोर तो that is what you going to do ठीक है तो ये है आपका let's see so again do not forget the like and the subscribe target people very close to 5k let's get that and let's get in more people okay Chelsea didn't concede a goal against Spurs since 2018 in Stamford Bridge exactly जैसे मैंने बोला था in the initial part of the stream goofy exactly and that's the whole point लेकिन every day is not a Sunday sometimes from Spurs perspective it might change considering the form Loftus-Cheek Hakim Ziyech Reece or Pulisic James middle position from my side okay wow interesting Chelsea lost main centre back हाँ I agree लेकिन Koulibaly looked very good in that first game लेकिन हाँ Koulibaly whether Silva और Aspi रख सकते हैं pace consistently is a big question mark so I agree with you Kai Havertz to Bayern Munich या FIFA में मेरे FIFA में वो Almighty Sports Plus में scored last minute goal for Leicester City to win the title. Oh yeah, of course. That was of course, man. Leicester and Chelsea have a good relation. By Brendan Rodgers also was the ex-Chelsea coach. Remember that. और हमने actually kind of gave you the FA Cup. Remember that. Thiago is injured for almost 6 months. Veggie. चलो Liverpool के quickly बात कर ले भाई against Palace. I must say Liverpool Palace always. I know it's a Monday night game, लेकिन always it's been a good game. मतलब disappoint नहीं हुए हम काफी बार अच्छा हुआ है ये गेम और गोल्स काफी होते हैं इस गेम यस लिवरपूल हैव बीन डोमिनेंट ओवर क्रिस्टल पैलेस इन द लास्ट 5 मीटिंग्स लेकिन आई थिंक सबको याद है टॉकिंग अबाउट ब्रेंडन रॉजर्स भाई देयर वाज एक 2014 में एक मैच जहां पर दे कैन नॉट फॉरगेट द पैलेस तो पैलेस लिवरपूल काफी क्लोज हो सकता है स्पेशली द फैक्ट दैट पैलेस में ज़ाहा इज प्लेइंग फॉर मूव तो हो सकता है he'll give his best shot ऑडिशन होगा for Chelsea who knows so that might be one thing लेकिन as Divyanshu says by Thiago is injured so that is really not good news let's see man by the way Palace
फर्स्ट वीकेंड में अच्छा नहीं की, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगेंस्ट आर्सेनल, बट वियरा इज ऑल्सो डूइंग मैडनेस. मैं बोलता हूँ वियरा हैज, यस ही इज मिसिंग गैलेगर, वो प्रीटी ऑब्वियस था, बट इट विल बी ओवरऑल आई थिंक दे विल गिव अ फाइट. यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लेट्स सी, आई एम मोर वरीड टू प्ले अगेंस्ट आर्सेनल दैन स्पर्स ऑल डे रॉन्ग. वाओ, ओके, हाय भाई, हाय श्रेय, कैसे हो? देखते हैं भाई श्रेय. मैंने यार चेल्सी बात कर लिया श्रेय, बट होपफुली विल गेट यू ऑन नेक्स्ट टाइम. बट बिग अप टू श्रेय पीपल, श्रेय एफसी यार, पीपल डू चेक हिम आउट एज वेल, ऑफ कोर्स फेलो चेल्सी ब्रदर हियर, बट होपफुली श्रेय विल गेट यू ऑन नेक्स्ट टाइम. तो यार क्विकली यार, द फैक्ट इज, अरे थैंक्स यार, थैंक्स एब्सोल्युटली आशीष, बिल्कुल. तो यहाँ पर देखिए, लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस में वुड यू स्टार्ट डार्विन नूनेज? इज इट टाइम टू डार्विन नूनेज टू स्टार्ट? आप बोलिए. और वुड यू से नहीं, जैसे हमने कवर किया था अबाउट चिलवेल फॉर चेल्सी, मे बी यू वुड से दैट फर्मिनो जो एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है, हु हैज बीन द टैलिस्मैन इन प्रीवियस सीजंस एक्सेप्ट फॉर लास्ट सीजन, हो सकता है दिस इज द बेस्ट वे टू कम बैक टू गिव हिम सम गेम टाइम, और मे बी दे गेट दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट, स्पेशली कंसिडरिंग जोटा शायद बाहर है, और ऑफ कोर्स तियागो सिल्वा भी, सॉरी तियागो भी बाहर है, राइट, उनके मिडफील्डर. तो द फैक्ट इज दे नीड सम एक्सपीरियंस अप टॉप. तो डोंट यू थिंक दैट you will start with Firmino, of course with Salah being there, with Luis Diaz being there, or do you think it was more a team selection problem the last game or a mentality problem? As per Klopp तो mentality problem थी. और in terms of midfield, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला है क्लॉप ने दैट इट्स नॉट अबाउट जस्ट साइनिंग एनी मिडफील्डर. ठीक है, वी हैव अ गुड स्क्वाड, हमें हमारे पास है कवर. द रीजन दैट वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मिडफील्डर राइट नाउ इज दैट दैट पर्सन शुड फिट वेल. ठीक है, तो अभी अवेलेबिलिटी नहीं है. मे बी दे आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर बेलिंगम एज थिंग्स स्टैंड. लेट्स सी. देखिए यार, अरे थैंक्स रेने, बिल्कुल बिल्कुल. आई वाज क्रिश्चियंस कुड लीव, नहीं नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी पॉसिबल. मतलब हाँ पॉसिबल है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन. दे आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट ऑफ द वीकेंड, डोंट वरी अबाउट दैट. नो, नूनेज इजंट रेडी टू स्टार्ट. या दिव्यांशु, आई एग्री विद यू एब्सोल्युटली. डार्विन नूनेज भाई बढ़िया इंपैक्ट प्लेयर है डेफिनेटली अभी के लिए. नो नूनेज, Darwin is to start bigger games ahead. Okay, no Darwin. Okay, got it. Happy to see your channel growing. Ankit bhai, the most hard. अरे thanks यार जाबिर, मतलब अभी ग्रो और भी होना चाहिए, लेकिन जाबिर definitely thanks just to be there always, and of course the comment helps, and more or less यार हम बात करते हैं फुटबॉल के बारे में in this channel end to end, तो हम we are definitely going to take a lot of opinion as well. Okay, देखिए, coming to Liverpool versus Crystal Palace, I would agree that Darwin Núñez को start नहीं करोगे, you will get him on as an impact player. But in place of Thiago, who would start? Let me know in the comments. Thiago की जगह कौन शुरू करेगा? Would you say it's time to Harvey Elliott to prove that he's a central midfielder as well? Or do you see नहीं, अगर हम डार्विन नूनेज के साथ शुरू करते हैं, वी नीड अ मिलनर इन मिडफील्ड, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, और यू वुड से नहीं नाबी केटा को शुरू करना है. पीपल लेट मी नो. यहाँ एफपीएल का होने वाला है. यस, अगेन वी वुड बी टेकिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स. आई मे नॉट नेसेसरली टेक एवरी कमेंट. अगर नहीं लिया हो तो सॉरी. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी आर नाउ मोनेटाइज्ड ऑन बोथ द चैनल्स. सो अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है, यू कैन ऑलवेज सेंड अ सुपर चैट. आई डोंट थिंक देयर आर चैनल्स हु टेक ईच एंड एवरी कमेंट. सो अगर आप एक्सपेक्ट करो ईच एंड एवरी कमेंट लो, तो आई एम सॉरी अबाउट इट. लेकिन हमें मूव ऑन करना पड़ेगा. आई विल टेक रेलेवेंट कमेंट्स टू द टॉपिक दैट आई एम स्पीकिंग. बाकी मैं स्टार कर रहा हूं, विल कम बैक टू इट लेटर. आई होप दैट्स फेयर एवरीवन, बिकॉज़ काफी डिस्कस करना है अपने को, राइट? बट मच लव टू एवरीवन हु इज हियर, एब्सोल्युटली. वुड यू? नहीं यार, नो वे, नो, नॉट इन अ हार्ट बीट, डेफिनेटली. हेलो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. बिल्कुल, चलो. निखिल आप लेट आए हो, हमने बात कर लिया है भाई. काफी देर होगी. अगेन चेल्सी ब्लूज एंड निखिल, यू हैव जॉइन लेट. प्लीज रीवॉच द स्ट्रीम, और अभी वेट करिए, आई कम बैक टू यू. मैंने स्टार किया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हम पिछले 54 मिनट से लाइव है, और लास्ट आधी घंटा में वही बात करें, तो अगर हम रिपीट करते रहे वही चीज, तो वी आर नॉट एबल टू मूव ऑन. आई होप दैट्स फेयर, राइट? लेकिन मच लव टू यू ऑल एज वेल. प्लीज वेट. ओके, कार्वालियो माइट कम ऑफ द बेंच, केटा शुड स्टार्ट, एंडी बोल रहे. ओके, चलो फाइनली मेरे क्वेश्चन का जवाब मिला. एंडी, मच लव फॉर यू फॉर दैट, बट डेफिनेटली ठीक है. It's a fair comment that Keita should probably prove that he's a starter as well, or that is why they paid big bucks for Keita. Remember, he was a cheap signing. लेकिन against, I know it's Crystal Palace, but they have a lot of physicality and trickery pace as well. हाँ, maybe Keita is the right person because Milner might not be able to match up उनके साथ. Or on the other hand, Harvey Elliott, you don't want to put him in a starter, and again put him in the risk of injury. He's coming after long term injury, जैसे मैंने बोला था about other players as well.
So that's a fair point. मुझे personally लगता है in this opinion, in this particular match, thanks Chelsea Blues, in this match, Liverpool versus Crystal Palace, I think it's an ideal match to start. Who else but Harvey Elliott? Harvey Elliott should start in my opinion. Harvey Elliott यार कर देगा. मतलब he has that got element. I have called it Harvey Elliott to be that surprise of midfield this season. आप देखना. मतलब maybe I'm wrong. Again मैंने neutral hat डाल के बोला ये. तो again people, Liverpool Crystal Palace आप बोलिए. Will it be a Zaha day or not? What are you expecting इस वाले मैच में? I am saying that considering कि यार first वाला weekend में Crystal Palace lost and they have something against Liverpool. They've been losing in the recent matches. There will be more fight. Yes, it is at Anfield, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ Liverpool definitely जीतेगी. I am saying Liverpool 3, Crystal Palace 1. और yes, Klopp ने बोला था fight till the end. वो नहीं missing थी last match में. So I'm going Liverpool 3, Crystal Palace 1. Let me know you guys what your prediction. Score predictions डाल दीजिए. Liverpool versus Crystal Palace. We have completed the third वाला match. Let's see. Okay, thanks Andy, means a lot. interesting. Liverpool lose 2-1. Wow. भाई first weekend में drop किए points, वापस से lose, वापस से drop करें points. Interesting comment. Again, I feel Liverpool will win this match and come back because it's time that they prove that they have that quality. 3-0 to Liverpool. Chelsea Blues बोल रहे हैं. Interesting. चलो यार, Liverpool वाला match हो गया, and then now let's move on. We will talk about Man City Bournemouth. Is there something to talk about it? यहाँ पर डायरेक्टली में आप ये आ जाते हैं भाई, कितना बेसिकली स्कोर करने वाले मैन सिटी बोर्नमथ में, और इज इट टू अर्ली, आर वी ओवर रिएक्टिंग, और स्टार्टिंग 11 क्या होगा, बिकॉज एफपीएल के लिए काफी इंटरेस्टिंग है. एंड यस, बाय द वे पीपल, एफपीएल स्ट्रीम कल डे टाइम हो गया, रिमेंबर, ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, जहां पर हम करते हैं एफपीएल स्ट्रीम, डेडलाइन स्ट्रीम. तो विल डू अराउंड नून, बिकॉज वी हैव डेडलाइन कल लेट दोपहर को, राइट. तो वो हम करने वाले हैं. Harvey Elliott might be bullied by Crystal Palace midfield. That's a point. लेकिन वही है, मतलब at some point they have to start Harvey Elliott as well. Big up Matata United, always much love. And yes, we are coming to the big game of Manchester United next, absolutely. Okay, Dhruv बोल रहे 3-0 to Manchester City. भाई 3-0 बहुत ही कम है, absolutely कम है. अरे thanks for coming as always, big love. But you know what? 3-0 to Manchester City. I would say that it might be more. As much as यार मैं बोलूंगा Bournemouth did well. Remember last weekend में Bournemouth अच्छा किया था. They got the better of Aston Villa, if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong, right? लेकिन हालैंड हैट्रिक इनकमिंग दिख रहा है एंडी को भाई, और 5 गोल्स मार देंगे 2 हफ्ते में. वाओ, बेचारा. They will, let's see यार, वही है, प्रीमियर लीग इज सो मच फन. व्हाई? बिकॉज ड्रामा मिलता है इवन इन द बिग गेम्स. आप देखो लास्ट सीजन में गेम था, इफ आई रिमेंबर राइट, इट वाज मैन सिटी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. लास्ट तक नहीं पता लग रहा था कौन जीतेगा, एंड लास्ट में भाई फोर्डन ने मार दिया गोल. वो होता है दैट क्लास जो है, विद 5 सब्स्टिट्यूशंस इट कम आउट. लेकिन अगेन देयर वाज अ गेम, आई थिंक मैन सिटी वर्सेस साउथहैम्पटन, वहां पर आई थिंक मैन सिटी डिड नॉट डू वेल. तो देयर आर गेम्स लाइक दैट इन द प्रीमियर लीग, और वही है प्रीमियर लीग की खासियत है. Man City 4-1, okay. Bournemouth defense and midfield so very well. You know what? That is because of Scott Parker. I have to give Scott Parker the credit, because Scott Parker as a player, remember, he was a tenacious midfielder himself. Or I remember clearly he was a voice on the pitch. हाँ, चेल्सी में भी खेला था उन्होंने, स्पर्स में भी खेला था. ब्रेंटफोर्ड विल विन अगेंस्ट, वाओ, उसमें आते हैं. आई विल स्टार दिस वन. दिव्यांशु नेक्स्ट यूनाइटेड की बातें करने वाले. 1-0 मैन सिटी, ओके, ये थोड़ा होगा. Premier League too easy for Haaland? No, I don't think so. Come on. I don't think you can judge against West Ham itself. We'll see. He played against Liverpool in the Community Shield. He looked out of place, I have to be honest. But yes, it was just the 3rd or 4th game of the season, including preseason games. But, there are still tests remaining. So, it's the jury is out. But again, looks like he'll do well. Absolutely. Okay, waiting for London Derby. या बिल्कुल आनंद प्रकाश, हमने उसके बारे में बात की है बिल्कुल. एंड यस, इफ यू आर लेट, डू पुट इन द प्रेडिक्शंस. एब्सोल्युटली. लिवरपूल 3, Palace 1 for me. City to win 2-0. Okay, Haaland 5, any opponent 0. Wow, 5-0 to City. Chelsea, City, United are all going to win this week. Wow. You know what? यहाँ पर the biggest question is, लेकिन who starts? Will Pep rotate and start Mahrez? That is the biggest question. Will he start Alvarez? The fact is, they are playing, if I'm not wrong, let me just check. Yeah, they are playing at home. So they are playing at home, and it is Bournemouth. So will he experiment a little bit? I think he might just, knowing Pep, he might just.
यस ही वांट्स हालैंड कनेक्शन एक है तो डेफिनेटली भाई गुंडोगन तो रहेंगे मिडफील्ड में, गुंडोगन डिब्रोइना तो रहेंगे, डिब्रोइना गुंडोगन हालैंड का कनेक्शन बढ़िया बन रहा है बिल्कुल. लेकिन ग्रीलिश, डोंट यू फील दैट ग्रीलिश as much as you would want to play him in form, for some reason, he's not so direct as what maybe a Foden could be on the left wing. And maybe Foden खेलेंगे left wing में, right wing में खेलेंगे आपके Mahrez. I'm just asking you all. Let's see. Brentford, West Ham United, Alex Johnson बोल रहे wow, Man City 2, Bournemouth 1 can do good. Wow, hello संजीव कैसे हो? Much love bro. एंड यस हम आएंगे भाई, दूसरे लीग्स में भी आएंगे डेफिनेटली. हालैंड, फोडेन, मारेज. हाँ, I go with this one. Andy, you're reading my mind. Come on. You're reading my mind or what? Or did you comment just after I said? But anyway, exactly what I'm going for the front three. I think Foden will play in midfield tomorrow. Wow, that's a good, interesting one. हाँ, क्योंकि वही टेनासिटी है बोलमत में डिफेंस में, तो आई थिंक आई नो why you're saying, क्योंकि यार they need that trickery in midfield. That's a fair call. United win 3-0. Ronaldo will start again. United next करने वाले आने वाले. Phillips not playing, just heard. Yeah, Phillips, know what? That's true. Phillips is not playing, but anyway, he wouldn't have started. Would he have? That's what it was. But by the way, Bernardo Silva, people, do you see Bernardo Silva will get any minutes in this game? In my opinion, by the fact is Frankie de Jong is closer to staying at Barcelona. You never know. Bernardo Silva might just get some minutes इसमें. लेकिन again off the bench at best. ठीक है. लेकिन Emerick Laporte is still absent from what I hear in defense. So looks like they might actually go with Stones and yes, Aki, as much as उन्होंने अच्छा किया था last week against West Ham, I think Aki might be dropped. So again FPL people, remember FPL managers, you might want to pick Stones from now on. I think Stones regular रहेंगे. That's what my guess is. But Cancelo and Walker start on either side. वो तो यार they pick themselves. Let's see, and of course thanks Shrey, and of course people who check out Shrey FC as well. I heard that De Bruyne has niggles. Wow, that's interesting. That's news if it's true. Again, अगर niggles है तो he may not start. That's interesting. Bye people, don't make De Bruyne your captain for this game week. That's what I would say. But if that's true, again I'll reconfirm that, Drew. Let me reconfirm that maybe in post. But I feel that De Bruyne, the fact that इतना basically connection मिल रहा है with Haaland, और सबने देखा भाई मेन्यू कार्ड, सबने देखा ही था वो जो मीम में हो रहा है, De Bruyne tweeting saying that let me assist you. That is something that is working. Let's see. Bernardo Barca, okay, wow. Bernardo Silva 25-34 minutes की presence रखेगी क्योंकि Pep is good in giving farewell to players. Wow, you actually think that Bernardo is going to Barcelona for real? People are so confident. I think Pep will bench Silva. Pep is very professional, and until bilkul. I agree with that point though, Divyanshu. Should have De Bruyne now. At least I have Salah. Okay. Barcelona owes City money for Ferran Torres. Wow. मतलब again, your lever activate किया तो hopefully there will be some going there. I can see Alvarez fits better than Haaland in Man City, and Haaland moving to Serie next season. Okay, that's interesting. Why यार? मतलब ऐसा क्यों दिख रहा है आपको? Haaland, in my opinion, is just in that mode of his career जहां पर वो learn भी कर सकते हैं as well as he's that fighter. तो एक है, in my opinion, Andy, I would like to respectfully disagree वहां पर because of the fact that Haaland has that element है. So I think he wants to learn under Pep. देखते हैं, मतलब it's too early, I know, but Alvarez also looks great. यार कुछ सीन नहीं है. Andreas Christensen का he's waiting. यार he'll stay there. Yes, by the time they are able to register, till that time he'll not start. लेकिन register हो जाएंगे. Maybe not this weekend, but register हो जाएंगे. That's what I would say. But कोई नहीं. If City lose Bernardo and Chelsea sign Fofana, De Jong and Aubameyang, can we close the gap and compete? I think the expectation will be media से तो definitely रहेगी. लेकिन again, knowing Tuchel, probably he will not agree with that because step by step process है. That it's a long game. Having said that, यार मुझे नहीं लगता De Jong आ रहे Chelsea. हाँ, मैंने हर दिन change किया ये, लेकिन that is the saga जो चल रहा है. मुझे लग रहा है he is probably staying at low salary. He may not be played initially because they see him as a centre back for whatever reason. वो बहाना है. But I feel that he might just stay at lowest wages. Haaland loves City, Dad. Yeah, that's also a point. Absolutely. Lucas Paqueta, Matheus Nunes, if Bernardo leaves, bhaiya. Parveen, first of all, welcome to the stream. Again, do not forget to like the stream. Okay. Lucas Paqueta और Matheus Nunes, मैं बोलता हूँ Lucas Paqueta. क्यों मैं बोलता हूँ? I'll explain it. As much as Matheus Nunes might, fit City style better, ज़्यादा basically skillful आप बोल सकते हो, you can argue that. But
और also Pep has gone on record saying that he's one of the best midfielders in Europe. ठीक है, he's actually said that. Lucas Paqueta ज़्यादा एक physicality लाते हैं in my opinion. I might be wrong, but let me know people. Yes, Matheus Nunes defensively is better, but Lucas Paqueta has that physical element थोड़ा सा ज़्यादा. तो I'm going with Lucas Paqueta. Also the fact that अगर Bernardo Silva को आप lose कर रहे हो, you see Bernardo Silva is more like a creator, versus maybe someone who's actually doing dirty work. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं in terms of fitment of the squad. But Pep might prefer Matheus Nunes. Alex Johnson, brother, if you don't know, ये क्या है? Ferran Torres money will go in 4 to 5 installments. Okay. चलो भाई, संजीव ने बता दिया 4 to 5 installments है deal. Barca has until Sunday. Yeah, exactly. हमने कर दिया था I think in the stream, right? So जैसे मैंने बोला that maybe Christensen does not play this weekend, but that does not mean that Christensen does not play for Barcelona. Barcelona still has time. They will register Christensen. वो wait कर रहे हैं, तो हो जाएगा in my opinion. I still prefer Fofana. I think De Jong will join. Oh, MUFC nahi yaar. I really doubt. Yaar, MUFC is third in the ranking as much as I'm concerned. Maybe I'm wrong, but that's just my opinion. Again, because of Champions League, but यार problem is first और second और third में बहुत difference है. वो बारसा ही बोल रहे यार, तो I don't think we can do that. अच्छा, for me भैया, if we spend 300 million, then compete to minimum होना चाहिए. सिर्फ top 4 embarrassing होगा. I think if we spend so much, yeah, I would expect a cup minimum, but I don't think it's fair. Just spending that much is not fair, especially जो gap already created है. I don't think हमारे पास कोई player ऐसे आ रहा है who's like the best in the world. Is De Jong the best in the world? No. Is Aubameyang the best in the world? No. और वो आ भी नहीं रहे, दोनों नहीं आएंगे मेरे ख्याल से. ठीक है, बाकी कुलीबाली आई एग्री, स्टर्लिंग क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा, तो वहां पर मैं बोलता हूँ राइट, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग द लीग विल बी टू मच, बट यस हम compete करेंगे, डेफिनेटली compete तो करना चाहिए, दैट आई एग्री. लेकिन आई एम गोइंग विद लाइक minimum 1 cup win and basically challenge for the title at best. Okay, summarize what has happened in the stream. Ronnie Plays, thanks for coming on. Do not forget again to like and subscribe to both our channels. यार हमने बात किया है अभी तक, we have done a proper preview and prediction of what? Arsenal Leicester, Chelsea Spurs, Liverpool Crystal Palace and Man City versus Bournemouth. अच्छा चलो, मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन ही की है, मैन सिटी बोर्नमथ मैं बोलता हूँ मैन सिटी टू स्कोर 3 goals, यस, एंड बोर्नमथ टू स्कोर 1 goal, यस. मैं उसका रीजन बोलता हूँ, द रीजन बीइंग दैट स्टोन्स इज गोइंग टू कम बैक फ्रॉम इंजरी, तो यहाँ पर एक मिस्टेक दिख रहा है. आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर फॉर फन, लेकिन दैट इज प्रीमियर लीग. और बोर्नमथ लास्ट वीकेंड का परफॉर्मेंस हम देखे तो इट कैन बी देयर, और 3 ही गोल्स, क्योंकि यार बोर्नमथ थोड़ी सी सॉलिड थी, नहीं तो 4-5 जाता मैं. चलो, टुकल फॉर्मेशन बदल देगा, डियोंग को स्ट्राइकर खिला देगा. आज एक जोक चल रहा था, पता नहीं आप लोग ने देखा है ट्विटर में, भाई डियोंग माइट टुकल ने डियोंग को मैसेज किया कि भाई हम आ जाओ भाई चेल्सी में, हम आपको राइट विंग बैक बना देंगे जैसे लॉफ्टस-चीक को बनाए. ठीक है भाई, आई एम सीइंग पीपल ऑन ट्विटर सेइंग लॉफ्टस-चीक शुड बी अ स्टार्टिंग राइट विंग बैक. आई एम लाइक सीरियसली मैन, इतना गिर गया अपना स्टैंडर्ड. एज मच एज लॉफ्टस-चीक आई लव द गाय, बट ही इज नॉट अ राइट विंग बैक स्टार्टर फॉर अ टीम which is wanting to challenge for the title. Come on, let's be honest about it. ठीक है, तो यहाँ पर तो उसी ट्वीट के बारे में बात करते हैं अबाउट डियोंग. टुकल बोले भाई हम राइट विंग बैक बना देंगे, आप आ जाइए, सेंटर बैक तो हुई हो आप कभी कभी. तो वहां पर उन्होंने किया मना कि भाई नहीं आ रहा मैं चेल्सी, मैं रह रहा हूँ बारसा में, चाहे पैसे नहीं पे करे, मैं राइट विंग बैक नहीं हूँ. तो टॉड बॉली बोल रहे भाई डोंट वरी, let's meet up for a meal. And then De Jong is like, oh yes man, I'm coming to you for a meal. And then ho gaya. That is a good one. Anyway, I think it was fake. Okay, Dhruv bol rahe, did Man City make a mistake by loaning out James McAtee? He is near 20 and his attributes are like Bernardo. Pep can develop him like Bernardo. परवीन, लेकिन वही है ना, अगर वो रहते भी, imagine अगर वो रहते, like how many games he would have started in the league in your opinion? मतलब yes, Foden has worked his way through, और आप बोलोगे that is the next step, लेकिन in my view people read too much into the age. I feel that Gundogan, भाई 12 महीनों पहले में Gundogan has had one of the best seasons ever. तो Gundogan is your starter for me. He's a starter, yes. तो I don't see him starting many games. That's all I'm saying. और Foden भी midfield में खेल सकते हैं, वहां पर obviously they have Mahrez कुछ नहीं रहेंगे.
मैं तो बोलता हूँ Alvarez भी has kind of overtaken in terms of just being one of the members who can start. तो इसलिए जेम्स मैकेटी को भेजा है. दैट्स द आई थिंक फेयर. और रिमेंबर, पेप एंड मैन सिटी डोंट लाइक अ बिग स्क्वाड. यस 5 सब्स्टिट्यूशंस है, बट एज मच एज पीपल थिंक भाई इतने प्लेयर्स हैं उनके पास, इतने क्वालिटी, द डिफरेंस इज उनका क्वालिटी हमेशा ही रहता है इन टर्म्स ऑफ बैकअप्स. दोज आर नॉट बैकअप्स, प्रॉपर कंपीटिंग प्लेयर्स होते हैं. आई डोंट थिंक उनका नंबर इन टर्म्स ऑफ द स्क्वाड से इतना रहता है. वी हैव कवर्ड दैट इन द सिटी एंड लिवरपूल प्रीव्यू for the season. Arey 8744 in the house. Always good to see you, bro. Big up to you as well in the channel. It's not about Champions League. MUFC culture is becoming toxic and depressing now, and he must be wishing a stable and happy life instead. Okay. The gap we are talking about, it was because Chilwell, James were injured, but if they stay fit and now we have Kukurea, gap might be closed. Well, let's hope Shreya आप correct हो. मतलब meanwhile लेकिन याद रखिए, City have also strengthened and how. So you cannot argue that Haaland is a 100 million striker who's come in 60 million, boss. So I don't think that can be forgotten. Yes, they have lost Gabriel Jesus and Sterling, but they have upgraded in Haaland, right? So you can argue that, right? So I don't think वो लोग भी still बैठे हैं. Liverpool, yes, I agree. We should be able to definitely, be neck to neck. I agree with that. No worry, we'll win Champions League this season. Tuchel's style is more suitable to win a cup, not a league. Well, let's hope so. You're right. देखते हैं भाई, स्क्वाड अच्छी बन रही है, लेकिन अभी तक पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त. देखते हैं ट्रांसफर सीजन में. The reason I said is because I don't see Chelsea in UCL next season, to be honest. But let's see. Wow, big call, Mudit. McAtee on loan, City will get him back. Depends on how he does. Yes. Or by the way, people, City fans, what do you think about Sergio Gomez? Yeah, Sergio Gomez, as per reports, he might go on loan to one of City's clubs. सिस्टर क्लब्स जो है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक वहां पर एक स्क्वाड में चाहिए. और डू यू थिंक दैट यू आर स्टिल गोइंग टू गो फॉर मे बी अ बेटर लेफ्ट बैक? मतलब व्हाट इज योर गट फीलिंग एज पर द रिपोर्ट्स? लेट मी नो आपका व्यू. 6-0, okay, final to City. Wow, Dion का ding dong. Oh man, Pep always respect the wish. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. Hence Silva to Barca is very much possible. Yeah, I agree there. Winter transfer window का ये point बहुत अच्छा दिव्यांशु का. I think I agree because मुझे लगता है ना, डियोंग का जो लॉयर वाला सिचुएशन है वो चलते रहेगा थोड़ा और महीनों के लिए. बहुत इतना इजी नहीं है एक दिन में कंप्लीट होना. तो आई थिंक ही माइट जस्ट स्टे एंड प्ले अ फ्यू गेम्स, और मीनवाइल दे विल कीप Bernardo Silva. और दिस इज वेरी गुड पॉइंट विद दिव्यांशु. ओके, डियोंग इज ट्रेनिंग एज गोलकीपर इन बारसा. माय गॉड, नहीं यार, कम ऑन. अरे बिग अप सीएफसी फहीम, व्हाट्स अप. यू नो व्हाट, coming back to this statement, it's Bartomeu who was definitely that. I would say that because Bartomeu ne, I don't know about corrupt, but I think what kind of contracts has he offered? Itna salaries, itna basically player sign kar liya, and then now with the following board ka problem hai. So abhi yaar, they have to find loopholes, or that is the only way. As much as we don't like as opposition fans, and I don't like it either, in especially in terms of De Jong. लेकिन the fact is, what is their solution? क्या करना चाहिए था उन्हें? हाँ, maybe they should have communicated better, लेकिन technically speaking, I don't think they could have done anything different. They had to गिरवी रखना था यार. They had to sell their stuff, and वो high risk high reward वाला strategy कर रहे. Let's see if it works for Barca fans. For their sake, it will work. But यार हो सकता है it may not. As Ben Jacobs has said, let's see. CFC Fahim, again, big up people. Do check out CFC Fahim as well. Growing channel, Chelsea bro as well. He knows his stuff inside out. And yes, Fahim bro, we did already discuss about Chelsea and Arsenal. Chelsea and Spurs. Let me know your predictions. Will Benjamin? No, I don't think he's coming back ever. But yeah, Manchester United lost against Brentford. They will panic. Chalo yaar, big match. Why is the big match? हम इसलिए वेट कर रहे थे. एवरीवन नोज क्या हुआ था लास्ट गेम में. भाई हार गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट गेम ऑफ सीजन, और जस्ट हारी नहीं थी यार. ब्राइटन ने एक स्कूलिंग दी थी, फुटबॉलिंग लेसन दिया था फर्स्ट हाफ में. यस, सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड केम बैक व्हेन रोनाल्डो वाज ऑन द पिच. फेयर इनफ. बट डू यू ऑल थिंक दैट दे नीड टू पैनिक इन ट्रांसफर मार्केट? डू यू ऑल थिंक? हाँ, राबियो एज वी स्पीक भाई टॉक्स चल रहे बिटवीन राबियोज मॉम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. एलेक्स मर्टो, क्या नाम है उनका, बेसिकली जो डायरेक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके बीच में बातें चल रही है. तो राबियो लग रहा है आने वाले हैं टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पीपल? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो योर व्यूज, बिकॉज मुझे लग रहा है एज मच एज आप बोलोगे दे नीड प्लेयर्स, आई थिंक दे नीड द मेंटालिटी आती नहीं है विद न्यू प्लेयर्स. एनी न्यू प्लेयर विल टेक टाइम. तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है ना, they need to be really selective in their transfer market. They cannot just buy anyone and everyone जो करते आ रहे हैं in the last few years. I disagree with most of the जनता. Yes, मैंने बोला है yes, Glazers are to blame more because of the decisions of the management, decisions towards the coach. वो गलत है. I don't think the
ट्रांसफर्स पर हमें क्वेश्चन करना चाहिए. वहां पर they have made a lot of signings, but are they the right signings? That is what you have to question. तो अभी I don't think they need to panic. अगर पैनिक करेंगे the same cycle will continue and continue and continue. They need mentality. The Manchester United mentality of winning, the Manchester United mentality of confidence in gameplay, वो उनको चाहिए यार. ब्राइटन के साथ, pardon my language, but the fact is they became like headless chickens in the first half. Yes, Lisandro Martinez का पहला मैच था, it's not fair on him, fair enough, but they were like, come on, अपने शेल में घुस गए थे यार. That is not a Manchester United. As much as I love it as an opposition fan, but the reality is, as a Premier League fan, generally, won't you like basically the traditional top four to come and battle it out again? So for me, I'm a little old school, so I feel that way as well. So, in my opinion, there should not be any panic in the transfer market. They have to basically set their mentality. Or for them, the most important part is to keep Ronaldo. Yes, he may not fit Ten Hag style in the future, or वो mentally अभी right नहीं होंगे, but come September 2nd, maybe if he's still there, he will be that captain on the pitch. Or not wearing the armband and captain on the pitch. क्योंकि जब वो आता है पिच पर, then they are motivated, then they are like attention, भाई बॉस आ गया अपना. That is the kind of thing हमने देखा था. I know just एक half of football है, लेकिन it was telling. और yes, ब्रेंटफोर्ड के साथ खेल रहे हैं भाई. ब्रेंटफोर्ड लास्ट वीकेंड में they came back against Leicester, right? Not a very good one by Leicester, लेकिन ब्रेंटफोर्ड के पास भी एम्बू और they have a टोनी, तो काफी अच्छा है उनके लिए. वेलबेक, वाओ, गुड कॉल. अभी के लिए फिट है तो, बट हाँ थोड़ा इंजरी प्रोन है आशीष, बस कोई नहीं. Gomez is staying this season. Pep has confirmed in today's press. Okay, thanks for confirming that, Parveen. Big up आपको. और City will go for on the left back. Wow, that also. Why City इस बार कर रही है यार madness. Let's see. Bartomeu, yeah, बिल्कुल. Bartomeu was the guy. Sanjeev, I agree with you. Thanks for confirming that. Kukurea not worth that money. City won't be mugged. Okay, wow. Please, Frankie de Jong. वेल उमतीती नहीं यार, कहाँ भाई, कहाँ उमतीती, कहाँ नहीं. वो क्या हो रहा है, उमतीती का क्या हो रहा है? वो जाने वाले थे ना, कहाँ जाने वाले थे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्सी जाने वाले थे क्या? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. चेल्सी विनिंग दिस 2-0 बोल रहे हैं सीएफसी फाहिम. ओके, बार्तेमियो मिल गया. मुझे टिकी टाका मारूंगा. Oh my god. City fan but hope Spurs get slapped. Oh wow. I love that comment. Oba's intermediary is meeting with Barca board right now. Operation Aubameyang to London is heating up. ओ, लेकिन जेरार्ड रोमेरो ने थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं. जेरार्ड रोमेरो 2 दिन से थोड़ा सा बोला था अबाउट फ्रेंकी एज वेल, और वो ट्रू नहीं निकला है लास्ट 2 दिन में. आई नो 99% उनका ट्रू ही निकला है इस विंडो में, लेकिन लास्ट 2 दिन में एक चीज ट्रू नहीं निकली थी अबाउट फ्रेंकी जो बोला था. इट वाज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू एंड एब्सोल्युटली फॉल्स. लेकिन ओबामेयांग, आई विल रियली शॉक्ड. यस, Tuchel loves Aubameyang, that's clear. Maybe he knows London also helps. Maybe he wants to take a revenge against Arsenal also helps. लेकिन is Chelsea his priority? मैं बोलता हूँ no. I would still say we should go for Ronaldo यार, अगर available है तो. But coming back to Manchester United, I feel that their tactic should be to keep a leader, keep a winner, keep a mentality monster like Ronaldo. That has to be the tactic. They are trying their best. अब देखते हैं क्या होता है. बिल्कुल सहज भाई, सहज, much love to you. I don't have trust in this board members. Wow, let's see. मैनएड को ना मैनेजर बदलना है ना प्लेयर्स बदलना, ओनर्स को बदलो. फील बैड फॉर मैन्यू. निखिल, again I know that Knighton, I think their ex director has kind of bid, मतलब not officially, like unofficially he says that he has basically a package ready, a consortium ready. लेकिन अगेन भाई, मतलब people will say वो तो needed है ही, but will it change something immediately? Maybe not. I still feel it is the level of recruitment जो हो रही है ना, that has to be questioned the most in our opinion, because वो mentality नहीं आ रही है. और of course captain on the pitch, वो coach पे blame करूंगा. I don't think Maguire is a captain. Let's agree everyone. Let's comment. Signing a few players won't solve the Man United issue. Rabiot's upgrade in McTominay, but definitely not the stand for Man United. Yes, again Andy, I have gone a little bit left field. Talking about left field, Rabiot, 90% of last season he was played in left midfield. ठीक है, he is not a left midfielder. Yes, his primary foot is left foot, लेकिन he's not a left midfielder. He's not a person of width. He's a person of skill. He is like something like, कैसे बोलोगे यार, a Lo Celso who does defensive work. That is what Rabiot is. So in my opinion, as much as he's definitely agree, he's McTominay पर तो definitely upgrade है. Is he that Premier League level of player in that midfield? Not really.
But is he that bad? जो लोग are making him out to be. I know Rio Ferdinand did a quick video about he has a brilliant left foot and all those things, and उसका meme बना है. Yeah, honestly, Rabiot 13 months ago, he was one of the sought after youngsters in Europe. मैं झूठ भी नहीं बोल रहा. That was a reality. हाँ, 12 महीना एकदम बेकार गया है. I agree with that. लेकिन वही है, he has, for anyone who watches Serie and I do, so he has played a lot in left midfield. So you have to give him that. But problem is not on the pitch. Off the pitch, लाते बहुत baggage. That's another problem. That is the last thing that Manchester United need. तो इसलिए मैं agree करता हूँ in major जनता. But in terms of tactics, I don't feel it's so bad as what people are making out to be. And they have Eriksen who can play number 6 as well, in my opinion. ठीक है. ये क्या चल अरे भाई अंकित भाई, the question is, will Ronaldo start or will he be on the bench? And also in my opinion, Martial should start in. यार Martial अभी भी यार 100% fit शायद ही होंगे. He's coming back after a hamstring, remember Divyanshu. So I don't think Martial will start. Rashford, yes, there is a lot of talk going on PSG के साथ. लेकिन यहाँ पर as per reports क्या है ना, रैशफोर्ड के जो एजेंट्स है और जो उनकी जो मैनेजमेंट है, दे आर वांटिंग दिस मूव. Rashford himself is not wanting this move. So there's a difference. So I think Rashford will start. Yes, he is not the right form, right mentality. Lekin the fact is, Martial might not start coming off from a hamstring. So Ronaldo might start. Ronaldo and Rashford दोनों start करेंगे along with Sancho. And इस मैच में अगर वापस से गलती किया ना एरिक टेन हाग ने, तब यार क्या ही तो आई विल ब्लेम एरिक टेन हाग. Eriksen has to start in number 6 in my opinion. आप लोग बोलिए, what do you see Manchester United starting against Brentford? Eriksen, and the fact that it's Brentford, remember people, Brentford के लिए Eriksen खेले हैं. He knows Brentford midfield inside out. तो मैं, as much as Brentford physical है, I would say Eriksen is higher on quality. He should start in midfield और next to him आप डालो फ्रेड को अभी के लिए. That is the only option. और कोई option नहीं उनके पास. Lisandro Martinez, after one game, you wouldn't put him in midfield. I would also consider playing Varane इस गेम के लिए. Okay, देखते हैं. United fans will never question the players who have been giving horrible performance. Yeah. Divyanshu, much love, bro. I agree with this 100%. 100% I agree. मतलब yes, lot of United fans also give lot of गाली देते players को. I agree. लेकिन majority जो है ना, पहला चीज बोलते हैं owners, glazers out. भाई, it's so easy excuse, man. It's so easy excuse. You need to have that player power going from United dressing room. First of all, they are playing जैसे चेल्सी में प्रॉब्लम है ना, they are playing maybe 1 week in maybe 4 weeks वो परफॉर्म करते हैं. चेल्सी में एटलीस्ट 2 हफ्ते करते हैं 4 वीक में से. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग यूनाइटेड. और यस, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, एक ही मैच है, बट वो फर्स्ट हाफ वाज टेलिंग. मेंटालिटी में इश्यू है. दैट इज द प्रॉब्लम. Okay, Mikhail in the house, bro. And then Mikhail, how are you? Of course, an almighty coach. And yes, that reminds us we have a membership as well, people. Do check it out, certainly. Bhai, काफी सारा content आने वाला है over the season. Already आ रहा है on both the channels. Yes, we have 2 channels for people who don't know. And please subscribe to both because we do madness in both the channels. You won't be disappointed. Even if you are more than welcome and give us feedback, right? So Bernardo to... wow. नहीं यार, नहीं होने वाला ये. परवीन नहीं होने वाला. आई डोंट सी दिस हैपनिंग. सिंपल एज दैट. या फ्रैंकी रहेंगे बारसा में एज थिंग्स आर गोइंग टुडे. लेट्स सी क्या होने वाला है. ओके, डू यू सी एनी क्लब इन प्रीमियर लीग वोंट स्टार्ट मैकटोमिने एज स्टार्टर? That's an interesting question, I must say. You know what? I think there are clubs who'll take him because come on, he can play. जो खेलते हैं national team में, he plays 3 the back में center back. That he's not too bad in that role. So there might be just teams who might go. Remember, Pep Guardiola has spoken of bias about City. He's a winner and proves everyone wrong. Wow, let's see. यार मैं तो बोलता हूँ भाई, चेल्सी के साथ भी bias against होता है. एरिक्सन नंबर 6 में खिला. या बिल्कुल मारोगे एरिक्सन को खिला के. नहीं यार मिकाइल, द थिंग इज लास्ट मैच में अगर आपने देखा है ना, clearly Eriksen playing in just behind the forward is not working. It is simply not working. So they need Eriksen to distribute balls because yaar, they don't have a ball distributor in number 6 position. McFred cannot do it. And the only option left is that. I'm not saying he's the ideal number 6. मैं बोल रहा हूँ that is the only option for them. Who else is there who can play in that midfield? Who can actually distribute the ball better? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ Eriksen. Also the fact that he knows Brentford. So that is also a reason. Plus, I see that, with Rashford, Bruno and Ronaldo coming back, I think they anyway have a lot of firepower up front. और यहाँ पर they have to start on the front foot, in my opinion. Do you see any club in Premier League starting McTominay in midfield? मैंने already जवाब दे दिया इसका. I will start Donny.
Oh, Donny है. Donny is an option. Okay, I missed Donny. But you know what? Donny is a good option. But Donny and Eriksen कुछ ज़्यादा हो जाएगा. We need someone. Yes, Fred is not a DM. लेकिन someone who's actually been there, done that थोड़ा ज़्यादा compared to Donny and Eriksen, which will be like a totally new United midfield. तो I know preseason में खेले थे उन साथ में. I think they didn't play in both number 6. एक मैच में शायद खेला था. Will bench Bruno and ask McTominay to stay at home. सेकंड पार्ट अच्छा लगा मुझे दिव्यांशु, लेकिन ब्रूनो तो थोड़ा सा हार्श यार एक मैच के बाद में. ही इज बीन द टैलिस्मैन. यस, आई डोंट रेट हिम एज मच एज पीपल लॉट ऑफ यूनाइटेड सपोर्टर्स मे डू, लेकिन या लॉट ऑफ यूनाइटेड सपोर्टर्स काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं ब्रूनो को. लेकिन वही है ना, ब्रूनो प्लेइंग इन द डीप रोल डजंट वर्क, क्योंकि यार हर बॉल को ही वांट्स टू get that, a De Bruyne pass. That's a problem between him and Eriksen. That's a difference. But yeah, do you think 22 go against Liverpool, how much chance of success empty stadium protest? Okay यार, yes, talking about empty stadium, कोई कुछ नहीं होने वाला. Let's be honest about it. I don't think anything is going to happen. Yes, their protest जो थे against Arnautovic, they made sure that the second bid did not go. Fair enough. लेकिन कुछ नहीं होने वाला भाई, मैं बोल रहा हूँ. They need to again talk, say that they have to put banners against players. Why aren't they putting banners against players? Please. Why aren't you questioning the players? Please tell me everyone. Please tell me everyone. Why aren't they questioning the players? Why aren't they questioning Erik Ten Hag? Erik Ten Hag is going only for his Dutch, prodigies. Why? Well, while they are very good, why? As in, they have to do better in their scouting. They have to do better in basically picking players. They have to do better in mentality on the pitch. I think it is more than just the ownership. Yes, ownership is a huge issue, but I don't think that's the solution. No problem. अरे बिल्कुल यार, मेरा अभी तक बंदा हुआ है, तो आई नो 2 दिन इस बार मना रहे लोग. कोई लोग कल बनाए थे, कोई लोग आज मना रहे. लेकिन हैप्पी रक्षाबंधन फॉर पीपल हु हैव डेफिनेटली सेलिब्रेटेड. Eriksen hope his health is okay playing for that garbage. Oh, come on, man. थोड़ा सा let's keep the language in check, Alec. But I hear you. You know what? Eriksen for me, I think he'll turn out to be a good signing. I really believe so. And for his sake, I definitely want him to do well. Yeah, but not for United's sake, but for his sake. United should play Sancho in midfield and Bruno at wings. नहीं यार, come on. नहीं. Sancho, by the way, centrally आ रहे थे last game में. Second half में he was playing centrally a lot. Maybe Erik Ten Hag is trying something that Tadic kiye the, but I don't think so. Sancho is best when he takes people on, or he was getting that confidence, so why lose that? Okay, yeah, they got Liverpool soon, and इसलिए मैं बोल रहा हूँ they need to sort out that midfield for sure. Not going for Sangare. You know what? Again, वो starter नहीं है, Andy. That's the problem. Would you start him and Lisandro Martinez and Malacia, and Gakpo? I don't think so. The kind of targets that they're going for, they're not going to rule that midfield. As much as in the future, Sangare might be that guy, I don't see even starting in United. Is he a huge upgrade to what they have? At least they're going for Rabiot. Rabiot is probably more experienced at European level. That might be a thing. But I don't agree with that either. Wow. This is a good comment though. Bruno needs to catch his form. बिल्कुल. So yes, people, come on. Brentford versus United, आप बोलिए क्या होने वाला है इस गेम में. Yes, they are going for, like I said, Gakpo, Rabiot, but it will be too late for them अगर आते भी इस weekend में. I don't think it's going to happen. But what do you think होने वाला है? Brentford, they have brought in a lot of players. भाई Damsgaard, मैंने बात नहीं किया Damsgaard. What do you think about Damsgaard? Damsgaard could be the signing. Man, I know physicality में थोड़ा सा lack करेंगे in the Premier League, but Damsgaard, किसी ने देखा था Damsgaard को for Denmark against I think a lot of teams in the Euros last season. Not just that, for Sampdoria also he's pretty decent. Damsgaard is a shot taker. Damsgaard is someone जो replace करेंगे Christian Eriksen को और ज़्यादा भी. He can do a lot more. So don't you think that Damsgaard will be that guy? और इस मैच में लगते हैं, I'll just check it out अगर Damsgaard available है. I don't think Damsgaard is available, right? Has he been signed already? Technically, let's see. लेकिन हाँ, he's going to come for sure. That वो तो आ रहा है. लेकिन मैं देख रहा हूँ Damsgaard, is he a official Brentford player or not? Okay, yes, he is. He is a Brentford player, people. लेकिन I don't think he is eligible for this game. It might be little late. नहीं? देखते हैं. भाई absolutely right. And सुनने आया था टेन हाग के ट्रांसफर में हाथ होगा तो प्लेयर्स क्यों नहीं आए. या बिल्कुल. Ten Hag's philosophy needs a team that is ready to give 100% every match for whole 90 minutes. I don't see that in United, sadly. Exactly, that's why the mentality, like I said. बिल्कुल.
United owners won't leave. I'm happy. So happy. Oh my god. Almost all players will be registered between today and tomorrow. Oh my god. Congratulations भाई दिव्यांशु. पता ही था यार, बारसा फोर्थ लीवर एक्टिवेट करने में बिजी थी लास्ट 24 घंटों में. फिर मीनवाइल डियोंग को भी रखेंगे और रजिस्टर भी कर लेंगे. भाई साहब क्या हो रहा है भाई? जाएगा कौन बाहर? कौन जा रहा है ये बोलिए. मतलब दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. लगता है क्या यार ओबामियांग वाला न्यूज सही है? इंटरमीडिएरी काइंड ऑफ टॉकिंग एक्सेट्रा. क्या लगता है भाई? आई स्टिल डाउट ओबामियांग छोड़ेगा. बट डेफिनेटली विल कम टू दैट एज वेल. यूनाइटेड नॉट मैनचेस्टर है, डेब्यू करेगा. ओके डैम्सगार्ड है यार. जय पटेल बोल रहे हैं भाई. थैंक्स यार कंफर्म करने के लिए. 2-1 विक्ट्री फॉर ब्रेंटफोर्ड. ओ माय गॉड. चलो यार मेरा प्रेडिक्शन ले लीजिए. यस यूनाइटेड हैवंट लुक कन्विंसिंग, लेकिन सेकंड हाफ as much as we would criticize second half, yes, in my opinion they did okay. Second half I don't think it was as bad as what people made it out to be. First time it was terrible, lekin second half they were quite good. So Ronaldo starting, in my opinion, yes, he has to start this game. Or Damsgaard starting for Brentford, let's see. मतलब debut करेगा लेकिन off the bench in my opinion. They already have a lot of attackers. So मुझे लग रहा है Lisandro Martinez versus Tony, man, Rafael Varane has to come. Come on, let's be honest. लेकिन फिर भी यार आई सी ब्रेंटफोर्ड स्कोरिंग एटलीस्ट 1 गोल. और मैं बोलता हूँ रोनाल्डो फैक्टर विल टर्न ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड. और आई एम सेइंग 3 goals. यस आई एम गोइंग फॉर लेफ्ट फील्ड प्रेडिक्शन लाइक आई ऑलवेज डू. मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन एट ब्रेंटफोर्ड 3-1 अगेंस्ट रन ऑफ प्ले. मैं बोल रहा हूँ. और क्योंकि यार रीजन है because I did see that spark coming when Ronaldo came on the pitch. I did see a lot of it during preseason that आया था. So if they get Eriksen in the right spot and Eriksen knowing Brentford's midfield, मुझे लगता है they can get that pass going and Ronaldo scoring. Let's see. Again, I don't want it as an opposition fan. ये मेरा prediction as a neutral. I can see Brentford being Denmark FC. Wow. Again, that FPS stream, I think Dead Sky Gaming. We are having it tomorrow noon. So remember, people, कल noon Indian Standard Time around 12ish or 12:30 to 1:30 कर लेंगे. क्या बोलते हो? FPL deadline stream करेंगे अपन on Almighty Sports Plus, which is our second channel. Check करिए and definitely do not forget to subscribe to that. Okay, United fans, nahi yaar, come on. Media loves to criticize Barcelona. Forza Barca, wow. Barca fans all. Okay, Frankie de Jong's agent didn't even meet with the club. They left without having a proper meeting, and the club is upset with the agent's behavior. Now tell me, isn't it unprofessional on Frankie de Jong's part? Matlab, why would they not meet? But मतलब the fact is they had to sort out only by meeting यार. मतलब थोड़ा सा सरप्राइज नहीं है. लेकिन हाँ, अगर वो लोग निकल गए हैं मतलब पत्थर की लकीर कर दिया भाई. वी आर नॉट इवन रेडी टू टॉक. वी नीड द मनी. या तो हमें पेंडिंग कैश दे दो, या तो हमें बोल दो कि यार वी कैन कंटिन्यू इन बार्सिलोना. दैट इज व्हाट बोल रहे. द फैक्ट इज, मैं वापस से बोलूंगा दैट लीगली देयर इज नथिंग रॉन्ग ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज. प्रॉब्लम इज यार यहाँ पर दोनों ही साइड्स एथिकली थोड़ा सा बेटर कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. दोनों ही साइड्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. पहला शुरुआत मैं बोलता हूँ यार बारसा ने की थी फ्रॉम देयर एंड. They were not communicating better to Frankie de Jong. They were not clear. लेकिन I think the fact that they finally cleared this week, यार, I don't think lawyers को ऐसा भी करना चाहिए. They have to consider that he's been there for a long while, or yeah, they should try and sort it out. मतलब there has to be an effort. लेकिन is Frankie obliged to do that? No. So technically, legally, there's nothing wrong. Since the arrival of CR7, United haven't won a league game which didn't feature Ronaldo. Wow, that's a great stat. Thanks, Sej. भाई कोई टीम जेम्स और प्राउस के लिए क्यों नहीं जा रही? United can go for him, even Arsenal. Yeah. Talk about number 6. Talk about Eriksen playing number 6. James Ward-Prowse could have been that guy, definitely. Everton beat United, there will be a riot. You mean, Alec, if Brentford beat United, right? Breaking news: Kunde won't be registered on time, hence will miss out on the opener against Rayo. Oh, yeah. Contradicting reports आ रहे हैं, पता नहीं. आप सोर्स बताइए. That's Sky Gaming. Yeah, बिल्कुल. और मैं तो बोल रहा हूँ 3-1. People, let me know. Brentford versus United, what is your score prediction in the chat below? And yes, people, वहां पर वापस से याद आ रहा है, members के लिए especially, there is definitely an extra kind of a prize. Yes, prediction league है. If you're a member of the channel, you are getting into prediction league. So do after the stream, comment below what are your predictions for the 10 EPL games, and that's going to score. और हम अगर हम late members मिल रहे और they are joining the prediction league late, you do not worry. Because हम देने वाले prize at the end of the season hopefully will be 10k at that time. Definitely we will be giving based on the average number of points आप score कर रहे हो. ठीक है, तो you can still enter if you are a member for the prediction league as well. And of course FPL league भी join करिए यार अगर नहीं किया तो. Koulibaly has missed 10 league matches in last 3 seasons. Chelsea should go for centre backs.
Wow. I think Tuchel has already said, Chandan, we need a centre back. We can do with almost centre back. Okay, साई बोल रहे agents of Frankie de Jong and Brathwaite have both left Barcelona the club. ये सेम चीज दिव्यांशु ने भी बोला था. Thanks साई. चलो यहाँ पर भाई प्रीमियर लीग की काफी बातें हो गई है. आई नो हमने टॉप 6 क्लब्स की ही बात की है. बाकी के आप कमेंट्स में डाल देना क्या आपके प्रेडिक्शन. ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर मैचेस एज वेल. Obviously talking about other matches by Aston Villa Everton is an early kickoff that's going to be interesting. There is of course Brighton Newcastle, so that's also going to be interesting. बहुत अच्छा है दोनों का फॉर्म. तो यू कैन से ब्राइटन न्यूकासल विल बी अ वेरी गुड गेम, हाई स्कोरिंग गेम आप एक्सपेक्ट करोगे. मैं बोलता हूँ ब्राइटन न्यूकासल 2-2. एस्टन विला एवर्टन मैं जा रहा हूँ. एस्टन विला हक दी थी लास्ट वीक लेकिन आई थिंक दे विल पुल अप द सॉक्स दिस टाइम. आई एम सेइंग एवर्टन फिर से हार का सामना करेगी. आई एम सेइंग एस्टन विला स्कोरिंग 2 goals वर्सेस एवर्टन स्कोरिंग 1 goal. सो 2-1 जा रहा हूँ. साउथहैम्पटन लीड्स. ओके यहाँ पर आई हैव टू गो विद लीड्स एज मच एज आई डोंट लाइक इट एज अ चेल्सी फैन. लेकिन लीड्स वुड प्रॉब्ली विन मे बी 3-0. यस अवे. वुल्स वर्सेस फुलम. फुलम रियली इम्प्रेस्ड लेकिन वुल्स आर आल्सो टेनिशियस. तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फॉर अनदर ड्रॉ फॉर फुलम. यस वुल्स फुलम मैं बोल रहा हूँ 1-1. दैट्स गोइंग टू बी फन. मित्रोविच हेडर एनीवन अगेन. डेफिनेटली लेट्स सी भाई. फुलम काफी अच्छा करी थी. बट नॉटिंघम फॉरेस्ट और वेस्ट हैम भी है वहां पर भाई. वेस्ट हैम कमिंग बैक. They have to pull up their socks, and West Ham beating Nottingham Forest by the odd goal. Let's go for a high scoring 3-2. What do you think? बहुत बढ़िया गेम होने वाला है hopefully. But let's see. I feel it's going to be 2-2 in Brentford vs United. Bana बोल रहे Bana big up. Visiting Brentford is tough. Okay. United not quite up for it defensively. That's a good point. Absolutely. लेकिन मुझे लग रहा है ना United mentality अगर right है ना मैं United can turn it on. मतलब if the mentality is right, or I think they better be right this time. That's the only thing मैं बोल रहा हूँ. और प्लस एरिक्सन इन मिडफील्ड खिलाना जाना चाहिए ना इन माय ओपिनियन. विद रोनाल्डो एक ट्यूनिंग बन सकती है. लीड्स विल विन अग्रीड. ओके यार दोनों व्हाई नॉट बोथ. We can visit both. Why not, man? Come on, let's do both, man. Historic stadiums. But talking about historic stadiums, people, yes, definitely, we are hopefully going to be in a historic moment for the channel this weekend because the idea is this weekend, यार आप हमें ले जाए 5K तक. So let's get us to 5K subscribers. Doesn't take a buck. Please subscribe. But do not forget to hit that bell notification icon. And not just on Almighty Blues FC, but also on Almighty Sports Plus. वहाँ पर भी we are on the road to 4K. So let's go to 5K and 4K respectively on both the channels. Certainly helps, and thanks a lot for people joining because we are going to continue. अभी यार continue करने वाले. Do you like Game of Thrones? नहीं यार मुझे Game of Thrones, to be honest, I have watched it. Yes, थोड़ा सा मतलब you get addicted to it, but I'm not that kind of guy, who kind of watch those kind of series. Well, it's just me. I rather want something which is extreme suspense. Drama is not me. I'm like extreme suspense or extreme comedy. मैं वैसा prefer करता हूँ. That's just me, right? Okay, Wolves defense looks shady last match. Yeah, इसलिए मैंने बोला है ना, it'll be a score draw. Andy, definitely, I agree there. लेकिन हाँ, tenacious definitely यार. Wolves, Graham Potter, very good manager. Yeah, but let's see if he can consistently do that. Okay, Barcelona wants around 25. Oh my God. 15 मिलियन में आपने खरीदा था, 25 मिलियन क्यों चाहिए भाई 5 महीनों के बाद में. यस लंबा कॉन्ट्रैक्ट हाँ था शायद, लेकिन फिर भी यार 15 मिलियन है मार्केट वैल्यू उनका. 15 मिलियन यूरोज. That's going to be interesting. People, what do you think? 25 million for Aubameyang, Chelsea should go. Chelsea could have gotten Depay on a free. लेकिन Chelsea opted not to go for Depay, clearly. और 25 मिलियन यूरोज में हमें शायद रोनाल्डो भी मिल जाए अगर रोनाल्डो सेल पे होते हैं इन द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो. आई डोंट नो, शुड वी वेट और शुड वी जस्ट गो फॉर ओबामेयांग. आई एम नॉट टू कन्विंस्ड विद ओबामेयांग. मैं सच में बोल रहा हूँ, मैंने फीफा में भी लिया था और उन्होंने भेज दिया. आई एम नॉट टू कन्विंस्ड बाय ओबामेयांग. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन बैक टुकल एज आई से you have to pick one. Camp Nou है, Santiago Bernabeu. अरे यार in terms of stadium I prefer Camp Nou. In terms of stadium, एक है मतलब Camp Nou का एक अलग ही होता है यार in terms of how I look at Camp Nou. एक aura लगता है. But Santiago Bernabeu can be good on a Champions League night. Put it that way. Players are the canvas, managers are the painters. It's just that how much time you give it to make a beautiful one. बिल्कुल. Wow, this is Dead Sky Gaming, man. You require applause. You definitely deserve applause because it's very easy for fans to kind of blame the board or blame only one party. It is basically a teamwork that happens, absolutely, including players, managers, backroom staff, everyone. How do you rate Traore in Chelsea? Which position will he placed? No, yaar. Alama Traore.
As much as Tuchel चाहते थे उनको wing back से, I don't rate him doing very well, because हमारे wing backs need to score goals. Remember, we need them to score goals. हमारे forward इतने goals नहीं करते, तो they also need to score goals. So Reece James, Ben Chilwell, Kukurea hopefully will score some goals for us. Or Aspilicueta, yeah, he'll at least get assists. अरे Aditya, big up bro, much love to you. Wow. Arsenal paid 15 million to offload Oba. Yeah, women football is fantastic. In fact, इस बार यार WSL का काफी चर्चा हो रहा है, and hopefully for their sake, it kind of is more watched after the madness जो था Camp Nou में last few women football के matches. And not just that, of course, the Euros, it created some buzz for sure. So let's hope for their sake. Again, I'm not an expert, लेकिन हाँ, I certainly, I'm a huge Sam Kerr fan, just to share with you. Having said that, भाई, there are other leagues. Quickly यहाँ पर आ जाएंगे. Yes, it's a long stream, people, because भाई काफी football है. We have to discuss lots. And यहाँ पर क्यों है भाई, Barcelona against Rayo. Barcelona fans in the house, and yes, Serie भी आएंगे, थोड़ा आएंगे. Being me, भाई यहाँ पर Serie दिख रहा है आपको पीछे मेरे. लेकिन what about this Barcelona against Rayo? It's going to be fun, right? Rayo के कौन है owner? Everyone knows that. Who is the Rayo owner? थोड़ा सा fun element हो सकता है इसमें. But Barcelona, will they experiment a lot? It also depends on who's available, who's not available. अच्छा, ओनर चेंज हो गए क्या? कोई नहीं, लेकिन आप बोलिए भाई, बार्सिलोना रायो has just been, I think, if I'm not wrong, just आए भाई. Let's see. Oba shouldn't be sold. He's a very good backup for Leva, and for sporting reasons he should stay, but for economic reasons Barca get 25 million. Okay, wow. Okay, again Chandan मैंने share कर लिया है. People will come back to this, लेकिन मैंने already share कर दिया चंदन उस पर. Yeah, I thought so, but I'm just looking now. यार मुझे किसी और नाम का दिख रहा है यार यहाँ पर. Even I thought R9 owns Rayo. Don't tell me he's actually moved on. I'm just seeing. तो maybe I'm wrong, but maybe co-owner है क्या? People who might know, man, especially La Liga fans, let me know. लेकिन मुझे भी लगा R9 actually owns, but that's why it'll be interesting यार. For me, Barca, देखिए, pre-season, और मैंने काफी स्ट्रीम से बताया, Barca, as much as pre-season they haven't won every game, they have looked the most threatening. और मुझे actually लगे Rafinha, man, oh, talk about pain. Rafinha has looked world class. Whenever he's come, he's looked world class. Yes, Lewandowski abhi bhi yaar, he needs to kind of get that chemistry going. लेकिन Rafinha and Dembele, और Ayu, Dibyanshu and every Barca fan or even neutrals आप बोलिए, are you seeing the fact that Dembele और अपने Rafinha इतना अच्छा कर रहे हैं that maybe they might actually play in both the wings, because Dembele अच्छा खेल सकते हैं left wing, maybe Rafinha right wing में अच्छा खेल सकते हैं as a starter, right? Are you seeing that, or do you see that if Barca want to keep Aubameyang, they might play Aubameyang on the left, they might play Rafinha on the right hand side, or you would say नहीं यार, Ferran Torres किस लिए बैठा है भाई, Ansu Fati किस लिए बैठा है? They have to get the left wing. What do you think? ये is the biggest question. Of course, it also depends on the defense कि भाई कौन register हुआ है, कौन नहीं हुआ है. But ऐसे दिव्यांशु and I think साई और बहुत लोग chat में share किए that they are going to be having registrations done. तो in my opinion, खाली शायद जूल्स कुंडे शायद नहीं खेले, स्टार्ट करे ऐसे भी यार. He is not kind of played any matches yet. So I think Jules Kunde might come off the bench अगर वो eligible है. नहीं तो I think they might go with Christensen, and they might go with your Araujo at right back, or at center back they might go for Garcia. Let me know, क्योंकि रायो के साथ है. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हो यहाँ पे. I think co-owner है. चलो, thank you दिव्यांशु. वही मैं सोचा co-owner है. Maybe stake he might not have more than 50%, इसलिए उनका नाम नहीं दिखा मुझे पहला. But I'm a little bit scared because last season we lost 2 times against Rayo. Yeah, that's a great point, Sajib. Again, Rayo did madness last season, by the way. Rayo can't hurt you. Barca is strong, but I think they won't have a comfortable match. I'm going with a 2-1 Barca win. Okay. Okay. Rashad Rahman बोल रहे हैं Oba is open to possible exit provided he satisfies the terms he's being offered. Wow, that's news for Chelsea fans as well. Okay. R9 82% ओनर है. अरे तो उनका नाम क्यों नहीं आया भाई? मैंने जब देखा, कोई नहीं, मे बी द वेबसाइट मैंने देखा गलत देखा था. चलो, थैंक या, मतलब आई न्यू दैट R9 is definitely there. Okay, that's Ronaldo, people. For those wondering who's R9, Ronaldo, the original Ronaldo. ठीक है, he owns 82% of Rayo, जो खेल रहे बारसा के साथ इस वीकेंड में.
भाई आज रात को भी एक मैच है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेविया का मैच है राइट, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. सेविया का डिफेंस भाई, आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. द रफीनिया एंड डेम्बेले कॉम्बो इज अनबिलीवेबल. या दे कैन स्विच विंग्स एंड दैट गिव्स एन अनप्रेडिक्टेबिलिटी. द कॉम्बो इज लीथल. या बिल्कुल दिव्यांशु, मुझे लगता है ना वहां पर थोड़ा सा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी जावी को. हाउ विल ही मैनेज फरहान टोरेस? डू यू थिंक they can let go Aubameyang and Ferran Torres is your substitute false nine? Do you see that? आप बोलिए, बिकॉज मैन सिटी में वो फॉल्स नाइन खेले काफी. भाई कल का स्ट्रीम सेव नहीं हुआ है. कौन सा सेव नहीं हुआ यार? कौन सा बोल रहे हो भाई? शायद भाई शायद आए सडन से और सडन से कुछ चौक दिए यार. ऐसा ऐसा न्यूज मत दिए. डेफिनेटली है यार, मैं देख रहा हूँ. आई एम जस्ट लुकिंग एट इट. आई एम जस्ट लुकिंग एट इट. भाई अच्छा अच्छा डिस्कशन चल रहा था अपना. क्या हो गया शायद भाई? ये सब चीज ऑफलाइन बोला करिए. दिख रहा है यार, इट इज देयर. व्हाट आर यू सेइंग? डियोंग टू चेल्सी, डी डेज हियर, फीफा 22. भाई हमने जीत लिया चैंपियंस लीग, दिख रहा है यार. शायद, कम ऑन. शायद ऑलमाइटी कोच, बिग अप भाई. भैया राफीना, डेम्बेले एंड लेवेंडोव्स्की विल स्टार्ट टुमारो. चलो, ओबा इज ओपन टू. या बिल्कुल, सीएफसी ब्लूज हमने वही डिस्कस किया था अभी. दैट्स गोना बी. How bad is Kovacic's knee injury? Yes, Mikhail, bro. By the way, another almighty coach in the house, and definitely a Chelsea ultra who's part of the panel a lot of times. Mikhail, we have spoken about Chelsea's match for 40 minutes. I was searching for Chelsea fans in the chat. It looks like some Chelsea fans joined late, but yeah, the problem is that it's a knee injury. So Kovacic yet again. It's very very saddening, very very saddening that the match that you want a ball carrier against a tenacious Tottenham midfield. I thought Kovacic would start, but not just this match, right? We are not having such an easy run first few weeks. So I think Kovacic is needed. Looks like it might take a couple of weeks. Not a very bad injury, the way Tuchel has sensed it. मुझे ऐसा लगा body language देखकर. लेकिन यार Kovacic will be a huge miss. Maybe Gallagher, if he has an impact of the bench, he'll start the future matches. But until Kovacic comes back, like a huge injury loss, yeah, definitely. Yeah, I'm hoping he comes back, in just a couple of weeks. Let's see. English, okay, that's a view for sure. Sevilla let go main players, but I hope they play good football. Yes. अरे हो गया यार शायद. क्या बोल रहे हो? मेसी हेलो एज वेल, अनदर ऑलमाइटी ब्लूज मेंबर. एंड यस, मेंबर्स जो भी यार ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रीम, एवरी मेंबर के लिए, स्पेशली पीपल मेंबर्स और इन इंडिया, दे आर एलिजिबल फॉर प्राइजेस. देयर इज अ प्रेडिक्शन लीग. सो ऑल यू हैव टू डू इज, आज का जो स्ट्रीम हो रहा है, अभी का जो स्ट्रीम हो रहा है, इस स्ट्रीम के बाद आपको स्ट्रीम के बाद जाना है और कमेंट करना नीचे 10 गेम्स, ईपीएल गेम्स का प्रेडिक्शन, स्कोर प्रेडिक्शन. और देयर विल बी अ पॉइंट्स, देयर विल बी एन एवरेज पॉइंट्स. बेस्ड ऑन दैट आप जीत सकते हो एट द एंड ऑफ द सीजन, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड वी आर गोइंग टू 10K सब्सक्राइबर्स, जो है कंडीशन फॉर द एफपीएल एज वेल. लेकिन प्रीटी श्योर आप लोग ले जाएंगे अपने को. अभी के लिए भाई 5K तो कर लीजिए सबसे पहले. मेंबर्स ओनली, फिक्सचर चेंज नहीं किया आप. I'm not sure क्या बोल रहे हैं आप. मेंबर्स ओनली स्ट्रीम, ओके, मेंबर्स ओनली स्ट्रीम इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, तो मैं यार फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमाइटी गोट, ऑलमाइटी कोच के साथ डेफिनेटली करना है अपने को. मैंने अनाउंस किया था कि यार जब 25 मेंबर्स हो जाएंगे ना, तो दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू डू अ प्रॉपर स्ट्रीम, बिकॉज तभी बनता है. 25 में मे बी 20 आएंगे, then there's a point of doing that, all member stream. So we'll definitely do that. Meanwhile, आप बोलिए Discord server, there's a Discord server link. Please join that. We can have a Discord server chat as well. Do DM me if you are connected on Instagram, on Twitter. It's Almighty Blues FC, easy to find. Definitely आप DM करिए. I would want to be having that communication with members. And again, thanks a lot. यार मुझे तो दिख रहा है यार, शायद मुझे दिख रहा है, दूसरे अकाउंट से दिख रहा है मुझे. Simple as that. Barca can let go of Oba, but Ferran is injured, though he can play as false nine. But I think Xavi will probably use him on the wings. As for Fati, I don't see him getting much time. Oh, Fati, not much time. Interesting यार. मुझे लग रहा था Fati इस बार फाड़ देंगे. नहीं. ZH United, I hope not यार. I hope not. Gakpo ले लो. ZH can be a starter at United. He's that good. Yes, because United खेलती है वो system at times. ठीक है, तो he can be a starter. अरे मंडे कोई नहीं, आप फुटबॉल एंजॉय करिए, हम ऐसे भी वॉच अलॉन्ग्स करेंगे. डेफिनेटली विल डू अ लॉट ऑफ कंटेंट, आप देखते ही हो. यस, बाय द वे, आई एम नॉट टू वेल, सो आई विल ट्राई एंड डू मॉर्निंग स्ट्रीम एज वेल टुमारो फॉर एफपीएल. This is going to be a 12 noon stream on Almighty Sports Plus. Barcelona won 21 million pounds, that is 25 million euros. हाँ बिल्कुल.
चेल्सी वांट टू पे फिक्स्ड अमाउंट मैक्सिमम 10.5 आधा यार आधा, ये क्या हो रहा है? ओ अच्छा, मेंबर्स वाले लीग। मैं द फैक्ट इज आज मैच नहीं ना मेसी, टुडे मैच इज नॉट देयर, सो कल मैच है, तो कल सुबह फर्स्ट थिंग आई पब्लिश इट। लेकिन आप ऑलरेडी, आपको पता है कौन से मैचेस हो, इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे कौन से मैचेस है, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दैट एंड पुट अ कमेंट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम एज वेल, मैं वो भी एक्सेप्ट करूंगा, नॉट इन लाइव चैट बट इन आई विल टेक दैट इन प्रेडिक्शन लीग। सो बट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं कैलकुलेट करूंगा लास्ट वीक कितना पॉइंट्स और एवरेज पॉइंट्स फॉर एवरी मेंबर जिन्होंने किया था predict, or I'm going to publish it again in the members community. Okay, Oba is the only experienced forward left after Lewandowski. I think we need Oba, but we shall not. We shall let go Depay. I don't have any problem with that. Oh, okay. Isco, Alex Telles, and Luke De Jong strengthened Sevilla massively. Yeah, massively. Would you agree? I don't think so. Well, I understand. एक second. By Luke De Jong has gone to PSV. Correct me if I'm wrong. Yeah. Luke De Jong has gone to Sevilla, but he's gone to PSV. तो लुक डियोंग इज लुक डी गोट नहीं है, लेकिन इसको और एलेक्स टेलेस आई एग्री मैसिवली, टाइम विल टेल, बिकॉज यार रीसेंट ईयर में इतना कुछ उखाड़ा नहीं उन्होंने। स्टिल फिर चेल्सी मैनेज कर लेगा। ओके चलो, किशोर क्रिएशन मच लव यार, हमने चेल्सी की बात की है अराउंड 40 मिनट्स। चेल्सी नॉट विलिंग टू रीच दोस फिगर्स, अभी यार शुरुआत है, देखते हैं अभी चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा ये। Bargain rate for Timo Werner, but the player chose a return Bundesliga. Is it true? Yeah, मतलब reports आए थे, लेकिन the fact is यार he hasn't worked with Chelsea. Yes, United play a different way, लेकिन quite clear था अगर हुआ भी है तो, और pretty sure I called it यार, he has to go back to Germany. Thanks Manav, always to bring these comments. हेलो भैया, हेलो रॉकी एम, यार लॉन्ग टाइम नो सी भाई, क्या ऑल गुड? यस, हमने चेल्सी की बातें की है काफी यार बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम में। 25 million, very good deal, but anything less than 15 to 18 million will isn't a very profitable deal. Okay, fair enough. चलो एसी मिलान आ जाते हैं भाई। भैया, do you think AC Milan will defend the Serie title this season? As a fanboy, I want them to do well in Champions League also. Yes, Real Madrid आप बोलोगे, मैंने नहीं बात किया, but we'll come to that. भाई, Barca fans, let me know your starting 11 by the way for the weekend. और रियल मैड्रिड फैंस अगर है तो आप लोग भी बोलिए भाई, उनका लेट है गेम, लेकिन they'll definitely be there as well. I am calling a Real Madrid win after the Super Cup win. ठीक है। AC Milan, man, Udinese. They are playing Udinese, first of all. They have not done great in the transfer market. मैंने कवर किया था along with couple of other Inter Milan fans. Definitely मैं बोलता हूँ AC Milan have not strengthened much. The main thing is AC Milan ने रखा अपना crux. They haven't sold players. Yes, I really wanted Renato Sanchez. आ जाते तो बढ़िया. Ziyech, as much as a Chelsea fan, I won't like it. For AC Milan's perspective, that would have been a great signing. Charles Ketelier is good, but is he the starter week in, week out? Maybe a Champions League 11? No. Lekin for Serie, I think he should be good. तो मैं देखता हूँ AC Milan have strengthened and kept their main guys. अभी भी they should not sell people. तो मैं बोलता हूँ AC Milan, Inter Milan और Juventus. Yes, मैं Juventus call कर रहा हूँ after जो news आया about Paredes. That maybe all these three clubs होंगे. Roma you would argue, लेकिन Roma इतने सारे चेंजेस सडन से जीतेंगे ये लीग यार, कम ऑन। तो रोमा थोड़ा फोर्थ में रहेगा, लेकिन ये तीनों क्लब्स बता नहीं सकते भाई। मैंने अगेन सेरिया सीजन प्रेडिक्शन मैंने किया है, तो डू वॉच दैट एपिसोड एज वेल। आई स्टिल फील चेल्सी मैनेज कर लेगा। ओके या बिल्कुल यार, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए शायद का बहुत अच्छा कमेंट है। मीनवाइल पीपल बोलिए भाई, एसी मिलान ओडिनेजी, एनीवन इंटरेस्टेड? भाई मैं बोलता हूँ एसी मिलान will definitely score goals. Udinese यार हमने खेला था और I saw them being porous, हमने फिनिश अच्छा नहीं किया था, लेकिन Udinese के पास भी बढ़िया प्लेयर्स है। They are a mini Watford. Yes, जो better players of Watford are there in Udinese. तो यार yes, they are missing their full back जो move on कर दी है, if I'm not wrong, but I would still say Molina has moved on, right? लेकिन I still feel that the fact is AC Milan will get it. Tomori extending, people, big news for AC Milan fans. Yes, not good for Chelsea fans to hear that again. लेकिन Tomori extending, huge news for me. वही है, they are just keeping their crux. वही है, they need less changes as possible. हाँ, थोड़े couple more additions हो तो बढ़िया होगा. But इस weekend तो भाई AC Milan जीतेगी Udinese. अरे यार अनूप, nice यार, nice. Why do players prefer Chelsea to Arsenal and vice versa transfers? Being the rivals, they don't have problem with that. You know what? वाइस वर्सा नहीं होता है, आई थिंक होता है आर्सेनल टू चेल्सी, चेल्सी टू आर्सेनल। हाँ,
मे बी बेटर चेक डेविड लुइस रिटायर हो गए थे. Sorry, Arsenal fans, but the reality is that, by the way, garam pani, like I said, I'm a little bit unwell. So I certainly feel that it's going to be Arsenal ke prime players, Chelsea get. But abhi yaar, Arsenal are doing madness, man. You cannot say that they're not doing well. Juve are doing business, but they need to sack Allegri. Yeah, boy, Allegri needs to change his, thoda negativity. AC Milan का टाइटल संकट में. इंटर एंड यूवे हैव स्ट्रॉन्ग विंडोज. होप यू नो व्हाट, मानव पिक्चर भी बाकी मेरे दोस्त. मेरे ख्याल से एसी मिलान विल मेक वन साइनिंग एटलीस्ट. उनके पास है, बजट है अराउंड 18 मिलियन है. जस्ट टू लेट यू नो. तो 18 मिलियन में आई नो कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर आने नहीं वाला, लेकिन जीएश अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है जाने वाले. एसी मिलान थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन वो जाने वाले. यस, उनके पास सालेमाकर्स भी है वहां पर. चार्ल्स कटलियर भी वाइड खेल सकते हैं, लेकिन चार्ल्स कटलियर विल बी मोर लाइक प्लेइंग इन द ब्राहिम डियाज पोजीशन फॉर मी. एवरीबडी यस. अरे आर यू सीरियस? 100 लाइक्स. ओके, 100 लाइक्स भी नहीं हुए सीरियसली भाई. हाथ जोड़ के बोलता हूँ यार, प्लीज लाइक कर दीजिए यार. लाइक कर, और मेरा ही नहीं, हर एक स्ट्रीमर को करा करिए यार. लाइक कर दीजिए प्लीज यार. अभी यार 32 लोग देख रहे हैं भाई, सब लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए. प्लीज गेट अस टू 5K यार. कम ऑन, वी डेफिनेटली डिजर्व दैट एटलीस्ट, इफ नॉट मोर. लेकिन प्लीज डू सब्सक्राइब टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. यस यार, इतना तो बनता ही यार. मतलब मैं टारगेट रखा हूँ, बहुत ही कम रखा हूँ, फॉर अ रीजन दैट आप लोग सोचोगे यार, कम ऑन, आई शुडंट बी ओवर एम्बिशियस, बट लेट्स गेट टू 150 लाइक्स यार पीपल. वी कैन डेफिनेटली गेट दैट. कम ऑन. थैंक्स मानव एंड रॉकी एम. बिल्कुल ओके. चलो यार, प्लेइंग 11 भी आ गया है बाय मीनवाइल बार्सा का. एंड यस पीपल, बार्सिलोना टू विन, एसी मिलान टू विन. देयर आर सम अदर गेम्स एज वेल. काफी इंटरेस्टिंग गेम्स नहीं है. आई थिंक एसी मिलान ओडिनेजी मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा जस्ट कंपैरेटिवली. यस आई नो दैट वेलेंसिया, चलो वो सब इतना डिटेल में नहीं बात करेंगे. लेट्स गो विद सेरिया में कौन सा है. आई एम जस्ट लुकिंग एट इट. सैलर्निटाना एंड रोमा. सैलर्निटाना का क्या स्टोरी था यार लास्ट सीजन में, सबको याद है. रोमा के साथ है, रोमा जीत जाएगी वो तो यार, जोसे मोरिनो. कम ऑन. तो दैट इज इट फॉर नाउ. आई थिंक यूवेंटस किसके साथ खेल रही है भाई, मैं देख रहा हूँ. लेचे वर्सेस इंटर है. ओके, इंटरेस्टिंग दैट. Bayern Munich Wolfsburg भी भाई बुंडेसलीगा में. That's not going to be a bad match as well. I know Bayern Munich will easily win, but हो सकता है close on that day. Simple as that, right? लेकिन हाँ, I'm just looking at people. Juventus का कौन सा मैच है? I'm just trying to figure it out. ओके, सैम्पडोरिया एटलांटा. भाई एटलांटा बहुत लोग छोड़ रहे, तो एटलांटा माइट बी गोइंग डाउन, नॉट गोइंग डाउन बट गोइंग डाउन इन देयर नॉर्मल पोजीशन दिस सीजन में. यूवेंटस का दिखा नहीं मुझे. ट्यूसडे को है क्या, मंडे नाइट को है क्या उनका, लग रहा है मुझे. हाँ, यूवेंटस आर प्लेइंग सासुओलो. ओह वाओ, दैट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग मैच. भाई काफी इंटरेस्टिंग वीकेंड है अगेन. थैंक्स फॉर जॉइनिंग. थैंक्स यूवे सासुओलो. थैंक्स अनिमेश. बिल्कुल बिल्कुल. और यस, मैंने डिटेल में बात नहीं की यूवेंटस का, बिकॉज वी हैव कवर्ड लाइक ऑलमोस्ट 12-13 मैचेस के बारे में बात किया, डिटेल प्रीव्यू किया है. सब लोग देख लेना जो भी मिस किए. बट गेट इन योर प्रेडिक्शंस, स्पेशली द मेंबर्स, बट नॉट इवन हो तो भाई कमेंट करिए स्ट्रीम के बाद में. और मेंबर्स के लिए भाई, वी आर गोइंग टू पब्लिश इट टुमारो ऑन द मेंबर्स कम्युनिटी. और ऑफ कोर्स नॉन मेंबर्स बाय एफपीएल जुड़ना, बिकॉज एफपीएल स्ट्रीम है कल 12 बजे. वी आर गोइंग टू डू 12:30 बजे. चलो, ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस वी विल सेट अप एन एफपीएल स्ट्रीम, डेडलाइन स्ट्रीम. Till next time, take care, and of course, hopefully, by Chelsea jeete this weekend, but very important weekend for Manchester United. We have a derby, but Manchester United have a derby of their own going on with their own club, man. मतलब unfortunately, बहुत important weekend उनके लिए in my opinion, big weekend for them. But not just that, Arsenal Leicester यार काफी अच्छा मैच होने वाला है. And like I said, Juventus Sassuolo है, AC Milan Udinese है, बारसा रायो, वो भी इंटरेस्टिंग होगा. बट ये सभी के लिए एंड हो रहा है. 2 घंटे बात कर लिए भाई, आप देखिए वापस. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. चलो, मच लव एंड विल बी बैक टुमारो ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस.